Hello friends, good evening. We are live on YouTube, but not yet started on the Zoom. We are waiting for our renowned speakers to join, and then we will start our today's session. So please allow us 2-3 minutes, and we will start our session officially. सर गुड इवनिंग, आवाज आ रही है आपको? सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज नहीं आ रही आपकी थोड़ी प्रॉपर, और वीडियो भी थोड़ी ब्लर हो रही है आपकी। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है मुझे आपकी। एम आई ऑडिबल सर? यस सर, यस सर। एम आई ऑडिबल सर? हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? फोटो नहीं आ रही, साफ आवाज आ रही है आपकी। हाँ, और पीछे का वो स्क्रीन नीचे कर दो ताकि वो पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड सही हो जाए। वो पीछे से रोशनी आ रही है काफी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रकाश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो पहला सेशन अपन डायरेक्ट टैक्स का रहेगा, आपका प्रकाश जी का। सो आप डायरेक्ट टैक्स लेंगे और प्रकाश जी इनडायरेक्ट कर ले, ऐसे करिए, या फिर जैसा भी आप लोग नहीं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए तो किसी और को रखा हुआ था ना। नहीं, इंटरनेशनल, सॉरी, प्रकाश जी का इंटरनेशनल। हाँ, बेसिकली इंटरनेशनल टैक्स में कुछ ज्यादा चेंज है नहीं, तो वो हाँ, साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे स्टार्ट कर लेंगे। 8-6-3 हो गए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी। और अतुल गुप्ता जी शायद बीच में 5-10 मिनट के लिए आएंगे। उन्होंने बोला था शायद उनका सेशन 6:15 तक खत्म हो जाएगा, शायद कहीं हो रहा है। तो इन द मीन टाइम ही विल बी ज्वाइनिंग। ठीक है, वही प्रकाश सर भी आ जाते हैं, फिर साथ में। प्रकाश सर अभी आ गए थे, वो दोबारा रीज्वाइन कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं इतना लाइव कर देता हूँ। 5 मिनट वेट कर लें? हाँ, मतलब वैसे लाइव कर देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। एज यू विश, एज यू विश। So, hello friends. I hope you all have seen the session on the budget, and I want you to reply, those who are watching on the YouTube. How was the budget as per you? We have our eminent speakers with us. CA Sachin Sinha ji, CA Prakash Sinha ji. Sachin Sinha ji will take care of the direct taxes, and Prakash ji will take indirect taxes as well, international taxes as well.
And our today's guest speaker, CA Atul Gupta ji, past president of ICI, he will be joining soon. And for international taxes, indirect taxes, we have our speakers, C. Arpit Aldia ji and C. Abhishek Rajaram ji, will be joining in the second half when we'll start our indirect tax session. So first we will do the direct taxes, and then we will do the international taxes. I can see your comments are coming. So in the meantime, I want all the participants kindly give your comments because you all of have seen the budget. And as per you, how was the budget? Whatever are your expectation, क्या कोई expectation आपकी met हुई या नहीं हुई है? We will listen the views of our eminent speakers as well. But in the meantime, I request all the participants kindly give your views as well, like whether your expectations were met or not. How was the budget? So I can see your comments. Nothing for the salary class, no change in the slab. Budget was not sensational and more of the policy document. So I liked it. So please keep writing. Please give your comments on the budget. How was the budget? Good evening, everyone. Good evening, Narsimha ji. Yes, JP Jain ji, we will take up this question as well with our speakers as well. Ki admin fees ki, yes, there was rumor that some admin fees to be levied for ITR filing. Those who are not paying any taxes. For that, there was a rumor. Good evening, Ajit ji. I think first या second session ही है budget का, because from tomorrow onwards many sessions will come. So we thought that we will do session on first itself, and therefore we requested our speakers to give time to us on first itself, and that's why we are here with all of you for this budget session. Sir, Sachin ji, Prakash ji, whenever you ready, let me know. We will start the session whenever you will say, sir. We are ready, sir. Okay. Sachin ji, start kare. Okay. So, good evening, everyone. And I welcome all the participants in our today's session. And I welcome our today's guest speaker, C. Prakash Sinha ji, Sachin Sinha ji, and our chief guest of the session, C. Atul Gupta ji, past president of ICI, is joining soon in few minutes. And our indirect tax speakers, C. Abhishek Rajaram ji and C. Arpit Aldia ji, they will be joining soon in the second half. So first, like I already said, we will cover direct tax changes with our two eminent speaker of our fraternity, and those who are very well-known speaker of direct tax. Let me give you the introduction of Prakash ji. Prakash ji is a very renowned chartered accountant and doing practice in the field of direct tax, indirect taxes, international taxes, and having office in Delhi, Connaught Place. And Sachin Sinha ji is also chartered accountant and doing practice of direct taxes, international taxes, corporate law, and sir is also having the office in Connaught Place, Delhi, and they both are very renowned speaker and has taken several sessions on the direct taxes with various forums of ICI, various other platforms, whether physically, whether virtually as well. So with this note, I would like to, sir, start with the Sachin ji se start kare, sir. Okay, so I would like to start with Sachin ji. Sir, how was the budget and what are your views and what are the changes in the budget? So I'll request you to take up the session further. So, good evening, friends. Thank you so much, Deepak ji, for nice introduction. And we are very much thankful to Study Cafe for giving us this opportunity. And we understand that, of course, since the budget has released just 3-4 hours back, so going through all the provisions is not possible in a short span of time. So we have tried to gather the important points which as per our understanding, these are important. And apart from this, if I give the overall view of the budget as it was expected, that in the year of election, the government will come with some such type of provisions which are much beneficial to those states which are where the election is going to be held in the near future. But the situation was not like that in my view. They have tried to settle the dust
reduce the litigation, and through this, of course, those judgments which were pronounced recently by the Supreme Court, and in turn the department view, it was the view of the department that these provisions may create some litigation or may give the benefit to the stakeholder, to the taxpayers. Then they try to clear those doubts and or we can say that they try to reverse based on the giving the provision, they try to reverse the judgment. So apart from this, few important benefits that are given, like the revision or the updation of return, because as you are aware that within the timing for filing of return is after individual, that is after 31st July up to 30th November, that is for the purpose of filing of international tax reporting, that 30th November. So after this, only 1 month time gap is there where you can file the belated return and the revised return up to that period. So they have tried to, and it may so happen that due to this reason, because of short time, there may be some mistake which may occur, which may traced later on, and the SSC feels that okay, there must be some income which he missed out to report. Then they have given a 2-year additional time to file the updated return. Of course, they have, for this purpose, they have inserted a separate clause in section 139, that is 8A. Apart from this, the most important benefit which we are generally used to take, that the claiming education cess as the expenditure as 40A2. So it was basically based on the judgment of Sesa Goa, the Bombay High Court, which the department has clarified this with this budget, that education cess is not as an allowable expenditure, so they will not allow this. So we'll discuss all these points in detail also. Apart from this, the 43B, one relaxation was there in the recent judgment of the Supreme Court in case of Aqua Technologies, which was pronounced by Honorable Supreme Court in the month of August 2021. That was relating to the debenture. If the debenture is paid in place of to the bank for the purpose of paying the interest or the conversion of loan, then the debenture is considered as the interest has been paid. Because the 43B says that the expenditure is, if it is allowable, then it is allowed only on the payment basis. Then the court, with this budget, they clarified that if such type of conversion, through such type of conversion, if the actual payment has not been made by the SSC, then the 43B deduction will not be allowed in this case. So these are the few important points which are in relation to the judgments which they tried to cover. And apart from this, if the case is pending before the income tax, before any authority like the appellate authority like Supreme Court, in the SSC's case or in any other case, and the matter of substantial question of law is there, then the department can defer the filing of appeal in this case. So the complete procedure has also been given in this regard. So these are the few important points we will discuss. We will take up these points in detail later on. So apart from this, one important change in 14A also, where it is said that because as you know that expenditure, if there is some portion of expenditure which is incurred for the purpose of income, which will be exempted income, but in the current year there is no income in this regard, so it was allowed earlier as an expenditure. So department has made it clarified that it will not be allowed. Apart from this, 37, there is important change where they say that the expenditure, if it is being incurred for the purpose of by any company, generally this type of expenditure is being made by the pharmaceutical company, who generally pays the perquisites to the doctors to promote their products. So they said if such type of products benefit are given,
then it will not be allowed, and if for the purpose, and it will be allowed only if the TDS is being deducted, and for this purpose 194 BQR R 194 R section has been inserted. One new section which is inserted in 194S, that is regarding the virtual digital asset. This is again a very important amendment in this budget, that is regarding the cryptocurrency. In other words, I can say that, which is usually generally used term, that cryptocurrency. So now they are saying that this is the virtual digital asset. So the taxation of virtual digital asset is also important. So these are few important changes. So we'll deep dive into these type of these provisions, but for the rest part, let's go to Prakash sir. So over to Prakash sir. Thank you, Sachinji. Thank you, Study Cafe, and thanks to all the participants who has logged in to understand the intricacies of the budget here. My personal understanding is that budget is excellent here. Why I'm trying to say budget is excellent here? We should not see the budget in a very myopic view, like what is for the individual, what is not for the individual. There are many more things which are very much interesting here. First of all, there was always a issue whether what will happen to the cryptocurrencies here, whether the cryptocurrency will be legal, whether the cryptocurrency will be illegal, how to treat that part here. There was lot of doubts was there, and particularly after the Supreme Court judgment in the case of the there was a case where the Supreme Court has banned the transaction on the cryptocurrency. That was caused by that notification was caused by the Supreme Court, and after that it was always a discussion was going on what will happen to the cryptocurrencies here. So for this part, we can understand that the government has come with a complete code, like the amendment in the section 2 subclause 47A, which talks about the virtual digital asset and the taxation of the virtual digital assets in the form of section 115 BBH. And the most important part is that it has also been covered as a property under section 56 to 10, and the TDS provision has also been applied for this purpose here. So it is a complete code has come on the issue of the virtual digital asset here. Second part that is coming here, I have listed around 25 major amendments here, 25 major amendment under the Income Tax Act. Most important part is that second is amendment in the definition of the slum cell, because the slum cell was quite a litigative issue. Earlier, what it was related to the sale. Now, the only one word has changed from the word sale. The word has been made as a transfer here. It has a lot of implications, and many cases which was from the High Court that will get reversed by this understanding here. Second amendment is that what Sachinji has already mentioned, that 14A. 14A amendment is quite a drastic amendment here, because it says that the expenditure which has been incurred in the previous year, that will be, which is for which there is no income, even though there is no income in the year, or which there is no income which has been accrued, or which no income has been received, but this expenditure is for the purpose of not a taxable income. So therefore that expenditure will be disallowed here. So it is a quite categorical statement by the law itself. This means, although it looks like that is a clarificatory, but yes, no, there will be lot of implication arising due to this one here. I can understand I am arguing around 4 to 5 matters on this ground itself before the tribunal here, and I can understand that how much there will be implication in on these issues here. Second issue, one important change in this section itself they have made. Yeah. That earlier this section was not a non-obstante clause. From this year they have made this non-obstante. So it will start with non-obstante
country contain any other provision of this act, so change also. Yes. So next point, am I audible, Sachinji? Yes, sir. Yes, sir. Because there is some certain disturbance in the internet here. So 2 points we have just discussed. We will discuss in detail all the points here. We have 25 points to discuss right now. Third point, which is coming due to the COVID, government has made that the payment which is being made for the You purpose can of switch your camera so that you can get the proper bandwidth. Now I'm Hello. audible. Now I'm audible. So you can switch off your camera so that you can get the proper bandwidth. I have switched off my camera. You're audible, sir. You're audible. Okay. So the third part is that amendment in the section 17. Section 17 amendment is quite a visible amendment which says that the amount which has been paid by the employer to its employee for the purpose of any medical treatment on account of the COVID, that will not be counted as a perquisite here. And the same, there is a corresponding amendment has also been made under the section 56 to 10 also, where it has been stated that the amount which has been received on account of this COVID by any persons here, that will also be not be covered under the 56 to 10. I will come in detail on that part also. Fourth section that is there, which Sachinji has already discussed, that is about the clarification on the 40A2. The 40A2, where the amount what taxes was there, the taxes will include the surcharge and cess, and it was always be deemed to be included the surcharge and cess. So therefore, if the tax will always count the surcharge and cess. We cannot get the deduction of the surcharge and cess separately here. This has been done to reverse some of the important, some of the noted or landmark judgment of the High Court. Fifth amendment is that amendment in the section 37. I will come detail in the later on. Sixth amendment is amendment in the section 50. Goodwill. Goodwill is an important issue which was debated last year. Sorry to disturb you. Yeah. अगर आपने कोई ये जो पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे, अगर स्लाइड चल सकती हो तो इफ यू कैन शेयर स्क्रीन, या पेपर पे लिखे हुए हैं आपने? मेरे एक्चुअली इट इज रिटन ऑन द पेपर हियर. ओके, नो इशू. सो हम बाद में मेमोरेंडम से दिखा देंगे, या फिर मेमोरेंडम हम ओपन कर लेंगे लेटर ऑन, सो दैट वी कैन टेल देम. Yes, I will discuss it with from the memorandum. ठीक है सर. Okay, and after that there is an amendment in the section 50. It is a very important amendment which talks about the goodwill. We know that there was lot of debate on the goodwill. Or last year it was mentioned that the goodwill not be an asset for the purpose of depreciation, and this year they have mentioned that any reduction in the value of the goodwill under section 50 will be also be counted as a transfer. If it will be counted as a transfer. I will come to this part. Second issue is very critical issue, section 68. We've all faced the addition due to section 68, and the law, and this time the scope of the 68 has been widened. The onus on the SSC has been increased here. What the onus has been increased? We say that if the loan and advances, if there are any credit which is in the nature of the loan and advances, then the person who is giving the loan advances should also explain the loan and such loan and advances. So 68 is quite a critical. The scope of 68 has been increased here. The onus which was there on the assessing of SSC has been increased, and therefore we can see that how the 68 will be more fatal now. Because on the 68 there is a section 115 BBE which talks about the 100% taxes, like 60% plus 10 plus here. So we can see that the scope of the 1568 read with 115 BBE. Now section 79. Section 79 has a major changes here. Major changes which talks about it is for the purpose of the merger and acquisition, because
restricts in the carry forward of the loss which the SSC has incurred if there is a transfer in the management here. This time there is something carve out has been given, particularly with the public sector undertaking and for the purpose of strategic investment. This carve out has been given. We will discuss this part here. Seventh, new section 79A, which Honorable Finance Minister has already stated that lot of people are claiming the deduction on account of the carried forward business loss if there is a income which is arising due to the search and seizure matters here. Section 79 is the new section which restricts or which prohibits such type of carried forward business loss or availment of the carried forward business loss. New section 115 BBD. 115 BBD is for the purpose of the company who receives the dividend from a foreign company. Under this provision, there was a tax at the rate of 10%. Now this section has come into the sunset clause. Why? After this, since there is no dividend distribution tax, so therefore all the income which the company is receiving, even though it is receiving from the foreign company in the form of dividend, that will be taxed at the corporate rate here. So this is the major amendment that is there. After that, I will come to this is the 12th amendment is 139(8)(a), that is called the updated returns. It is a new concept which has been introduced here. What is the 139(8)(a)? How this 139(8)(a) will be, who can file the updated return, and how this return will be subject to assessment here. Amendment in the 143(3) also is one of the major amendment this time, because this gives the assessment by the assessing officer, and if this is the assessment by the assessing officer, there is an amendment which has been given how the power of the assessing officer has been discussed about for few of the issues like trust and the 2010-23C issues here. Fourth, the scheme of the faceless assessment has been completely revamped. Faceless assessment, we know that faceless appeal and faceless assessment is always a matter of debate, and lot of cases were pending or where had been decided recently by the Honorable High Court, including in the case of Sanjay Agarwal case of the Delhi High Court here. The amendment which has been done under the scheme of the faceless assessment here. With this faceless assessment, the new scheme has come that talks about the faceless TPO provision also. So faceless TPO issue has also come, and faceless DRP has also come. So as far as the DRP will also be there, we will discuss that how the DRP is going to be the faceless. Amendment in the reassessment mechanism. We all are suffered. In fact, I will tell you suffered due to the amendment in the section 147, 148, 148A, 149, 150, and 151 in the last year. Lot of because the amendment was made and the government got the power by way of the ordinance and thereafter the act to issue the notices from which was expiring as on 31st March 2020 to the 31st March 2021. After that, the government by way of the notification and explanation in the notification 20/2021 and 38/2021, government issues the notice 148 notice after 31st of March 2021 and till 30th June 2021. All the notices had been quashed by different high courts here. However, again, the government has touched the scheme of the 148, 148A, and 149, and also the new section has been inserted. New section talks about the 148B. We will discuss the section 148B in detail. 153 is an important provision. 153B is also important. A new provision has come, 156B also. We will discuss that how the 156B will be there.
There's a new section called 158AB and 170B, 170A that has also come into the statute here. 194, Sachinji has rightly discussed the 194R and 194S. These are the new TDS provision which has come into the statute. Most important part, section 263 scope, revision by the commissioner. We all know that the commissioner can revise the order of the assessing officer if the order is erroneous and detriment or prejudicial to the interest of the revenue. If both the conditions are satisfied, then the commissioner can revise the order of the assessing officer. Now, the scope of the 263 has been widened to include the order of the transfer pricing officer also. So now the TPO order made under this TPO order passed by the transfer pricing officer will also be amenable to section 263. These are the major amendment. One major amendment which is there, and I'm surprised that why this amendment has come. I'm surprised that this is the section 248. If you people know that section 248 is the important provision under the Income Tax Act, which gives the power, which in fact entitles the SSE to make an appeal before the CIT appeal. I'm just reading the 248. What is the provision of 248? 248 is an important provision where an SSE has paid the tax on behalf of someone, and this tax has to be borne by himself. Then, and if he is not satisfied, then he can very well approach to the CIT appeal that this tax is not proper. And this appeal, the power of appeal, in addition to the section 246A. So I'm just going to the section 248. I don't know, I'm not sure about how the government is trying to cover this aspect here, but the 248 issue is one important here. Just hold on, sir. 248 says that appeal by a person denying liability to deduct tax in certain cases. Recently, there was a case where the 248 has been used. I understand that it was Reliance cases here, Reliance Communications cases here, where they have paid on the erections here, and the issue was there whether the amount was subject to the TDS or not. They have paid the taxes, and after that they have agitated the matter under 248. It says that under 240, where under an agreement or other arrangement, the tax deductible on any income other than interest under section 195 is to be borne by the person by whom the income is payable, and such person having paid such tax to the credit of central government claims no tax is required to be deducted on such income, he may appeal to the commissioner appeal for the declaration that no tax is deductible on such income. What happens here? We know that we generally apply for the 195 and 197 certificate, particularly 195 certificates here. And if we don't get the 195 certificate as per our, and we understand that the tax is not payable, but the department levies the tax, then what we do, we have to cover, and this tax is to be borne by us. Then we try to apply this 248, and after that we file an appeal. Here there is amendment. It says that the 248 of the income tax, the following proviso shall be inserted, provided that no appeal shall be filed, no appeal shall be filed where the tax is paid to the credit of central government on or after first day of appeal 2022. Therefore, this 248A has come to a sunset clause, which says that we cannot file the appeal. I have to search out where the mechanism has been provided, that which provision then we can invoke for the purpose of filing the appeal. Then there must be some amendment, corresponding amendment in that section 246A. So let's start with the discussion here. I have just briefed that what are the major amendment into the direct tax law. Now we can go to each of the
provisions here. And if you allow, I can share the, in fact, I can share the finance bill itself. And from the finance bill itself, we can discuss this amendment here. Yes, sir. You can share your screen. Okay, okay, that's right here. Sachinji, you have the finance bill copy. Can you share it? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Please, please. Is it visible, sir? Yes. No, no, your screen is not visible. It's visible now, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir. Come to the first clause here. Okay. Come to the first clause, that is the section 242C amendment, clause 3. Down the line, sir. You have to page number 20, sir, 20. Yes, sir. Page number 20. Next page, sir. Page number 20. Yes, sir. Yes, sir. Now I start this. Page number, sir. First, yes. Start. This is the amendment in the major amendment, I will tell you, that under the slum cell. Because under the slum cell, there was always an issue. What was the term sale? Earlier, the definition was of the terms, earlier the definition was, I'm just reading the definition. Earlier, the definition of the slum cell was 42C. That said section defines the slum cell as the transfer of one or more undertaking by any means for a lump sum consideration without value being assigned to the individual, being asset and liability. In such sale, the term sale was important, and the term sale was not defined under the Income Tax Act. The term sale was defined under the Goods Transfer of Property Act, and for the purpose of Transfer of Property Act, the sale was there for the purpose of the cash was there. A cash was requisite consideration for the purpose of sale. Then there was an issue before the High Court when there was a asset has been transferred, and based on this asset, some other instrument was given to the person who are doing this slum sale. The court has come to the understanding, or the court has given the court order was that will not be subject to the slum sale. In lieu, for this purpose here, the definition of the term slum sale has been amended, and the word sale has been removed to substitute the word transfer. So now the transfer will include the sale. Transfer is a much wider word than the sale, and we can understand by way of this one, lot of matter which were pending before the High Court, they will be addressing through these issues here. Coming to the second issue about the virtual digital asset, section 47. This is the new insertion under the section 2, and it says that clause 47 has been inserted. And what is this one?
And we can see the language of the 2 clause 47. It talks about the virtual digital asset. Lot of assets now with the increased IT penetration in India, lot of persons are purchasing the virtual currencies here. We can understand whether they are asset or not. And please understand one more thing, that this is not the cover under the term capital asset. This is covered under the separate asset called a virtual digital asset. And this has been separately taxed under section 115 BBH at the rate of 30%, and the TDS mechanism has been given separately here. So this is not a capital asset. So there is no question of the long term and short term. I'm just trying to read this part here. What is the section 2 clause 42 says here? This section defines the expression, the Virtual digital asset. Before on the slum cell amendment is a retrospective amendment. The slum cell amendment is the retrospective amendment, and it will apply from the 1st April 2020 and the assessment year 21-22 also. So a lot of persons who are doing the slum cell by way of tax planning, they will be captured here. So you can say that this is the retrospective amendment. The slum cell first amendment was a retrospective amendment. Second, about the virtual digital asset. Let's see what is the scope of the virtual digital asset. I'm reading the notes on the clauses here. It says that virtual digital asset to mean, very much important, virtual asset mean. It does not say includes here. It says that any information, code or number or token not being the Indian currency or foreign currency generated through the cryptographic means or other by whatever name called, providing digital representation or the value exchange with or without consideration, with the promise or representation to have inherent value or functions as a store of the value or a unit on account of including its use or the financial transactions or investment, but not limited to the investment scheme, can be transferred, stored, and traded electronically. If these are the assets which can be traded electronically, it will also include NFT also, that is called a non-fungible token or any other token of the similar nature by whatever name called. We know that lot of in the Bitcoin also there are a lot of things has come which are called the non-fungible tokens here. Any other digital assets has been notified by the central government. The central government has kept that yes, they can notify. It is further proposed to provide the central government by notification in the official gazette to exclude any digital assets from the definition of the virtual digital asset subject to such condition as been prescribed. And this meaning has applicable in the 1st April 2022. This means that it will apply from the final assessment year 23-24. Similar amendment has been made in the section 115 BBH. Sachinji, can you go to the 115 BBH? I want to go to this part. 115 BBH is the clause number 28. Yes, sir. 128. What is the 115 BBH talks about? It says that where the total income of an SSE, it says that SSE may be resident or non-resident, includes any income by way of transfer of the virtual digital assets. The transfer definition has kept the same. The definition of the transfer under section 2 subclause 47 remains the same. So only the new clause has come 247A virtual digital assets, and it says that where the total income of the SSE includes any income from the transfer of virtual digital assets, the income tax payable shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on the income from transfer transfer of such virtual digital asset at the rate of 30%. So the 30% rate has been prescribed under 15 BBH, and after that they have also been given that there will be no deduction of the expenditure. It says that notwithstanding anything contained in any other provision of this act, no deduction in respect of any expenditure will be allowed, and no set off of loss from the transfer of virtual digital will be allowed. So these are the important provision. We cannot get a set off also.
earlier in the like in the case of the speculation income, if you have the speculation loss, you can get a set off here. But it says that no, you will not be allowed any set off, no set off or loss from the transfer of the virtual digital assets computed under clause A of 1 shall be allowed against income computed under any other provision of this act to the SSC, and such loss shall not be allowed to carry forward to a succeeding assessment year. So this loss, if there is a loss, if there is a loss, you cannot set off with this loss, you cannot carry forward this loss, and this income will be taxed in the transfer. On this transfer, the income will be taxed at the rate of 30%. 30%. Now come to the section 56 to 10 also. There is an amendment in the 56 to 10. Amendment, corresponding amendment has been given. (56)(2)(10), the last part, Sachinji, in the explanation, the expression property, yes, yes, expansion down the line, the explanation property. The explanation property shall have the same meaning as assigned to it under clause D of the explanation 7. So it will catch the 56 to 7 and include the virtual digital asset. So therefore, the virtual digital asset is subject to the 56 to 10 also. You cannot gift also. You cannot transfer it, or you cannot gift also under the 56 to 10 also. So this is the complete law on the 56 to 10. I understand that there is some TDS has also been applied for this issue. Sachin ji? Yes, sir. 194S has been inserted. Yes, come to that 194S. Yes, 194S, new section. It talks about any person responsible for paying to a resident any sum. Now it talks about the resident. Under 115 BBH, any SSC bill taxable was taxable. This means resident as well as non-resident. Here it says any person responsible for paying to a resident. This means 195 will be invoked for the purpose of non-resident. Any person responsible for paying to a resident any sum by way of consideration for the transfer of virtual digital asset shall at the time of credit of such sum to the account of the resident or at the payment of such sum by any mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to 1% of such sum, so 1% of such sum as the income tax. So we have understand that there is a virtual digital asset which has been defined under section 247A. This is a asset. If you transfer this asset, it will be subject to the tax, and this is a special rate tax under section 115 BBH. It is not covered under the term capital asset, so therefore the chapter of the capital gain is not going to apply into this part. It is a separate assets. It has not been covered under the term capital gain or capital asset, so therefore the capital gain will not be applied. So therefore, there cannot be any capital, long-term capital gain or short-term capital gain. It is totally a separate asset which is subject to the tax at the rate of 30% on the transfer of the such asset. No set-off will be allowed. No carry forward of the loss will be allowed under this part here. No expenditure will also be allowed. And further, under section 194S, it has been subject to the TDS at the rate of 1%. And moreover, it will be subject to the 56 to 10, wherever the gift of the virtual digital asset will also be covered. So this was the complete transaction on the virtual digital asset. Now come to the section 14A amendment, sir.
we are trying to cover major amendments. There's a lot of amendment in the 14, 11, 12. I'm not trying to cover the 11 and 12. Let's see the 14A. There are a lot of litigation on the 14A, and let's see how the revenue is trying to amend this law. The 14A, what the section 14A reads here. Just read the 14A initially. We have the 14A along with we have the rule 8D, but it changes the 14A. Yes, 14A. For the purpose of the computing the total income under this chapter, no deduction shall be allowed in respect of the expenditure incurred by the assessee in relation to the income which does not form part of the total income under this act. It says that there will be, if there is an expenditure and if there is corresponding there is an income and that income is not part of the total income, then the deduction of such expenditure will not be allowed. This was the provision of the 14A, but lot of litigation has taken place on this 14A. The issue was there if some year there is expenditure, but there is no corresponding income, then the appellate authority has allowed this expenditure, saying that since there is no corresponding income into that year, although there is expenditure, but there is no corresponding income into this year, so therefore the 14A cannot be invoked into this part here. There is an amendment which has been made. What the amendment is says that it says the amendment says there are two amendments here. First amendment, it says that 14A in subsection 1, for the purpose of the word, now it will apply, notwithstanding anything to the contrary contained in this act for the purpose. So it says that whatever it has been contained, notwithstanding. So this section will start with the notwithstanding anything to the contrary contained in this act and for the purpose of this act. And after that, there is explanation. What the explanation is there? Read this part. For the removal of doubt. Now, this explanation, like this wording, like this one, like it is a clarificatory amendment. It looks like that it is a clarificatory amendment. It says that for the removal of doubt, it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the provision of this section shall apply and shall deem to have always been applied in the case where the income not forming the total income under this act has not accrued or arisen or has not received during the previous year relevant to the assessment year, and the expenditure has been incurred during the said previous year in relation to such income not forming part of the total income. This means even though we don't have the income in the previous year, but there is expenditure which has been incurred for the purpose of that income, therefore that expenditure will also be disallowed under the 14A. This is the major amendment under the 14A. Lot of litigations, I feel that it will be taken care of this ones. And I understand this 14A amendment is there, like clause 9. Like clause 9, it says that this amendment will take place from the 1st of April 2020 and accordingly apply to the relevant year, assessment year 2022-23. This means the transaction which has been done in the assessment year 21-22, that will subject to be governed by the new law. This means this is the retrospective amendment. This amendment will apply from the Finance Act from the assessment year 2022-23. Generally, all the amendments should apply from the 23-24, but this amendment will apply from the 22-23. Most important part that is coming here. Sachinji, can we go to the next amendment here? Can we go to the section 17? Yes, sir. Clause number 10. Yes. Section 17, that it says that there are certain perquisite there are certain payment which will not be a perquisite, and
here it says that in respect of any illness related to the COVID-19, subject to such condition as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. So what is the section 10 is trying to say? Clause 10 is trying to say. Clause 10 seeks to amend the section 17 of the Income Tax Act relating to the salary, perquisite and profit in lieu of salary. Clause 2 of the said section inter alia provide the definition of the term perquisite and also the proviso to the said clause provide that certain exclusion which shall not be part of the perquisite here. Clause 2 of the said proviso provide that any sum paid by the employer in respect of the expenditure actually incurred by the employee on the medical treatment of any member of his family on certain specified cases shall not be part of the perquisite here. Amendment, what is the amendment? Amendment is that the clause 2 has been inserted, the new subclause to provide that any sum paid by the employer in respect of the expenditure actually incurred by the employee on the medical treatment of any member of his family in respect of any illness related to COVID-19, subject to such condition as may be notified by the central government in this behalf shall not be forming part of the perquisite. The amendment will take effect retrospectively from 1st April 2020 and accordingly will apply for the assessment year 2021. We all know that COVID-19 has done a lot of harm to a lot of people here, including I have personally suffered from the COVID-19, and I understand that many people have suffered in the COVID-19, particularly the second wave and now the third wave, and a lot of people has died on account of this one. The Supreme Court has framed the law related to some compensation which that will be made to the SSC, to the person on account of this COVID. The issue was there whether this compensation will be subject to tax or not. I'm not going into this debate, but whatever the amount that the employer has paid to the employee on account of the expenditure for the treatment of the COVID-19 related disease or COVID-19 related pandemic for the employee or the only member of the employee, that will not be covered as a perquisite as per section amendment in the section 217, and this amendment will apply from the assessment year 2020 from the assessment year 2021. Now the issue is there for the assessment year 2021 who has already filed the return, how they will be filing the return, whether there is any mechanism that we can file the return. Lot of salaried employee has already filed the return. If we have filed the return and if we can revise the return, we should revise the return by way of this one here. Again, sir, इसके रेस्पेक्ट में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था मई जून समवेयर कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यू टू कोविड ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करता है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज परक्विजिट्स. Very good. That is last year notification आया था सर. That's good. So can we come to the section 56 again, 56 to 10. Again, clause number 16. Yes, sir. Again, due to the COVID, if there is some payment, then it will not be part of the income also. Let's see what is what is the amendment is there. In the clause 10, there is amendment. After that, there is a clause, in the clause that there is a clause 12 and the clause 13 has been inserted. What is the clause 12? Come to downline here. In the proviso occurring after the item B of subsection of clause C, after clause 11 and before explanation, the following clause shall be inserted. What is inserted? By an individual, received by individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on the medical treatment or the treatment of any member of his family from his illness related to COVID-19, subject to such condition, and the central government may by notification in the official gazette specify this behalf. So if the COVID related receipt is there, then it will not be covered under the 56 to 10 also. This is another amendment is there by way of 13 number. Can you clause 13 here?
by a member of the family of a deceased person, from the employer of the deceased person, it is there, from any person, from any other person or persons to the extent of such sum or aggregate of such sum does not exceed 10 lakh rupees, where the cause of death of such person is illness related to COVID-19 and the payment is received within the 12 months from the date of the death of such person and subject to such other condition as the central government may notify. So these are the important relief which a person, which an individual has got by way of that this income, the receipt will not be subject to tax. I'm thankful that respected Anil Gupta, sir, Atul Gupta sir has joined here, our past president. I welcome him, sir. Sir, welcome you. Yes, sir. With the kind permission from Atul Gupta sir, may I continue, sir, or sir, Deepak Gupta sir, will you like that Atul Gupta sir should address the audience? Sir, Atul sir, just wanted to ask if you have any other session, so we can take up your session first, or you want us to continue to Prakash sir? I have the another session. Okay. I can check with them that in case, because how much time Prakash ji will take? Around, sir, around half an hour to 45 minutes, sir. I have nothing more to speak, sir, because we have not done anything work on that part here. Okay. So Prakash ji, can we take Atul sir session first and then we will continue? Why not, sir? It will be my privilege to listen him, sir. So thank you very much, Deepak ji. Can I start? Yes, sir, just let me give, although you don't require any introduction. No, welcome. It's okay. Because the time is precious for everybody. Yes, sir. Yeah. So good evening, friends, and let me first apologize for being interjecting between Prakash ji and the session was going on the direct taxes, and I believe that he is a great contributor. Friends, just to share with you, as far as the indirect taxes are concerned, though we have another panelist who will be addressing, but it's great that that today we are gathered here in this evening, and we have a large gathering available in the Study Cafe program, wherein we will be discussing the various budget provisions made with the direct tax, indirect tax, and the other side of the economy, which are being presented today. As far as the changes are there, I will not be taking much time, and on a very fast track, I will be sharing with you the changes which are being brought in as far as the GST is concerned into this particular budget. The first change which is there, and I believe that the change which will hit the SSCs and their working capital management, and then they will be facing challenges in the claiming the ITC credit further. You are aware that earlier we were claiming the credit through the 2A, and then it was being shifted to 2B, that the credit which is getting reflected in the 2B only you are allowed to claim. Now, my dear friend, apart from this, there are the two very, very important changes which are being brought in into the provisions this time, and going to implement from the date it will be notified once the president assent will be there. The first one, that they have inserted the certain negative list. Further to we are aware that there is a block credit. I'm not talking about the block credit section 17(5). मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. I'm speaking about the section 38. जिस section 38 के अंदर जो है वो उन्होंने हमारे को 5 नए जो है वो दिए हैं ब्लॉक की. अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है, मतलब in case this will happen, then the credit will be further blocked and the credit will not be allowed to claim. तो फर्स्ट वन उन्होंने बोला कि अगर आपने एक नया रजिस्ट्रेशन लिया है और उस नया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि लेट अस से कि मैं आपको बोलूंगा कि 60 डेज तक आप कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, सो लेट अस से, आई एम नॉट सेइंग 60 डेज दे हैव प्रिस्क्राइब्ड, बट दे हैव टेकन द पावर दैट इन केस यू हैव टेकन द न्यू रजिस्ट्रेशन, दे विल से दैट फॉर सर्टेन पीरियड्स यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम द क्रेडिट एट ऑल. तो चाहे वो 2B में आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको क्रेडिट ना लेने के लिए आपको कहा जा सकता है.
जो दूसरी बात है वो ये कि जो नॉर्मली होता है कि आपने जो है वो अगर जो है वो टैक्स आप टाइम पे लगातार नहीं दे पा रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे कि आपको जो है वो क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तीसरी बात जो है वो अगर आपका जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपका टैक्स ड्यू है वो आपका जीएसटीआर 3B से ज्यादा है, तो अगर आपने जीएसटीआर 1 में जो टैक्स दिखाया और जीएसटीआर 3B में आपने जो टैक्स दिखाया, दोनों में डिफरेंस है। जीएसटीआर 1 में आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी लेकिन आपने पेमेंट कम करी है, तो वो आपके क्रेडिट को रोक देंगे। और जो चौथी बात है वो ये कि अगर आपके वेंडर ने कोई कमिट किया, रॉन्ग कुछ कमिट किया और उसने कोई क्रेडिट ज्यादा ले लिया, तो सपोज कीजिए कि वेंडर ने पर्टिकुलर कुछ 2B से ज्यादा क्रेडिट ले लिया और उस केस में वो आपके वेंडर को वो पकड़ते हैं, तो वेंडर ने जो आपको सप्लाई किया, जिस वेंडर से आपने सप्लाई लिया, उस केस में आपको जो है वो क्रेडिट को जो है वो आपके ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जो दूसरा है वो पांचवा कि उन्होंने बोला कि हम आपको जो है वो कंडीशंस देंगे कि सपोज कीजिए कि आपको टैक्स जो है वो 98% आपको 2B क्रेडिट लेजर से लेना है और 2% कैश में पे करना है और आपने उसको अडेयर नहीं किया, तो हम आपका क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो आपका ब्लॉक क्रेडिट है, आपने सेक्शन 16 की कंडीशंस कि आपके पास एक वैलिड इनवॉइस है, बिजनेस क्रेडिट है, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई, आप वेंडर ने पेमेंट कर दी और आपने जो है वो उसकी रिटर्न फाइल कर दी, ये 5 कंडीशन हमें सेक्शन 16 में देखने को मिलती थी। सेक्शन 17 में हमारे को ब्लॉक क्रेडिट की कंडीशंस मिलती थी। वो सारी कंडीशन पूरी करने के बाद अगर आपके 2B के अंदर वो क्रेडिट आ भी रहा है और वो एलिजिबल क्रेडिट है, तो भी इन 5 रीजंस की वजह से आपके क्रेडिट को रोका जा सकता है। तो ये एक नया प्रोविजन जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा सेक्शन 16 के अंदर, जो अमेंडमेंट जो है वो इस बजट के अंदर जो है वो प्रपोज की गई है। एक और चीज है जो इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो है तो अपने आप में अलग, लेकिन मैं आपको वहां पर यहीं पर बोलूंगा कि एक और चीज जो है वो इससे जुड़ी हुई है, और वो ये कि आपको पता है कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था 94/2020, जिसके अंदर ये बोला गया था कि आप 99% टैक्स जो है वो आप इनपुट क्रेडिट लेजर से दे सकते हैं और 1% आपको कैश लेजर से देना पड़ेगा। ये बात है हमारी जो एप्लीकेबल होनी थी 1 जनवरी 2021 से। लेकिन एक गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ और उसमें क्योंकि लीगल बैकिंग अवेलेबल नहीं थी, तो इस प्रोविजन को जो है, नोटिफिकेशन को जो है वो अपने आप में चैलेंज किया गया। उस बात को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अब एक नया अमेंडमेंट जो है वो एक सेक्शन 49 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके अंदर बोला गया है कि गवर्नमेंट समय समय पे एक थ्रेशोल्ड प्रेस्क्राइब करेगी कि कितना पैसा आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं और कितना पैसा आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा। तो जो एक्साइज में डील करते थे उन्हें पता है कि पहले कहा जाता था कि आपको पीएलए से आपको इतना ही पे करने दिया जाएगा और कैश में आपको पे करना पड़ेगा। द सेम प्रोविजन इज बीइंग नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन द जीएसटी एज वेल। तो आपके पास जो इनपुट क्रेडिट को लेके जो 4 बातें हम लोगों को सबको समझनी है। पहली बात, सेक्शन 16 में जो 5 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो पूरी करनी है। क्रेडिट आपका ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपको 2B के अंदर जो क्रेडिट आएगा वही मिलेगा। फोर्थ बात, जो सेक्शन 8 के अंदर 38 के अंदर 5 कंडीशन दी गई हैं, अगर उनमें से कोई भी चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके क्रेडिट को रोका जा सकता है। और पांचवी और लास्ट बात कि आपके 2B में सब कुछ होने के बाद भी वो 5 कंडीशन आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तब भी उसके बावजूद भी आपको एक परसेंटेज बता दी जाएगी कि इतना पैसा आप जो है, तो लेट अस से माय आउटपुट लायबिलिटी इज 2 लाख, तो मुझे बता दिया जाएगा कि आप क्रेडिट से, लेट अस से उन्होंने बोला 1% की बात करते हैं, तो 198 you can pay through the credit ledger and 2000 rupees you have to pay in cash only। तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे एसएससीज के लिए एक नया कंप्लायंस, एक नई चैलेंज और एक जो है वो अपने आप में लिक्विडिटी को लेके अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। यस, all these are being done for the better compliances, better collections, to see that the evasions are not there, so it's good, but ultimately for the certain percentage of SSC, ultimately everybody has to comply with this will be a new challenge। इसके अलावा जो कुछ और अमेंडमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा है हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस को लेके। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके पहले हमारे पास एक प्रोविजन होता था कि अगर आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक अगर आपका टैक्स रिटर्न नहीं गया है, तो उस केस में आपको जो है वो रिटर्न, जो मैं ये बात कर रहा हूं कंपोजिशन एसएससीज के लिए, तो कंपोजिशन एसएससीज के लिए नॉर्मली होता था कि अगर आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं गई है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पर वो रिटर्न तो फाइल करते हैं, एनुअली फाइल करते हैं, तो क्या मैं 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तब मेरा कैंसिल होगा? तो इस बात की एनोमली को रिमूव करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जब आपकी ड्यू डेट है, तो अगर आप कंपोजिशन डीलर है और आपकी ड्यू डेट है, लेट अस से आपकी ड्यू डेट है 15 अप्रैल है,
तो आपको 15, अगर आपने 15 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे नॉर्मल एसएससीज हैं उनके लिए जो है वो बोला गया कि अगर जो है वो आप जो है वो अपने रिटर्न, तो आपको अगर जो रिटर्न पीरियड आपको दिया गया है, आप जो है वो उसमें कंटिन्यूअसली, अगर आप जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेट अस से आपको जो है वो, तो आपको उस केस के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल जो है वो कर दिया जाएगा। कंटिन्यूअस पीरियड क्या है वो अभी डिफाइन किया जाएगा। तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप 2 रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या 4 रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। दैट इज नॉट बीइंग डिफाइंड राइट नाउ, बट अदरवाइज इट इज देयर। एक वेलकम चेंज है जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर, और वो है हमारा जितनी भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। तो सपोज कीजिए मैंने लास्ट ईयर से रिलेटेड कोई इनवॉइस था, मुझे क्रेडिट लेना था, मैं नहीं ले पाया। मैंने जो है वो 1 मिनट के लिए कोई क्रेडिट नोट इशू करना था, मैं नहीं कर पाया। तो उसके लिए मेरे पास पीरियड होता था कि मुझे 30 सितंबर की जो मेरी रिटर्न है, मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया और अगर मैं कोई क्रेडिट नहीं ले पाया तो मैं उसको जो है वो 20 अक्टूबर की जो डेट थी, मतलब जो मेरी ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो नॉर्मली हम कहा करते थे कि 20 अक्टूबर तक जो है वो आपको, अगर जो भी आपने क्रेडिट नहीं लिया वो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट है उसके तहत जो है वो आपको 30 नवंबर तक का पीरियड कर दिया गया है कि आपने अगर कोई भी मिस्टेक है, आपने क्रेडिट नोट इशू करना था भूल गए, आपने किसी का क्रेडिट लेना था वो भूल गए, या आपने कोई और मिस्टेक कर दी है, तो आपको वो रेक्टिफिकेशन के लिए जो पीरियड है वो जो पहले 20 अक्टूबर हुआ करता था वो 30 नवंबर जो है वो कर दिया गया है। तो आपको जो है वो एक रिलीफ यहां पर आपने को देखने को मिला। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हमारे पास जब जीएसटी ओरिजिनली आया था तो हमें बताया गया था कि एक आपका सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा, बायर को उसको एक्सेप्ट करना है, तो वो अपने आप में जीएसटीआर 1 के बाद 2A का मैचिंग वो उस तरीके से करने की बात की गई थी। वो हमारा इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ था। और यहाँ पर जो है वो एसएससीज अपने आप 2B देखता है और उसके बेसिस पे क्रेडिट ले लेता है, उसको फाइनली एक परचेज रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। तो वो प्रोविजन क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो अब उस प्रोविजन को जो है वो लॉ बुक से हटा दिया गया है और उसमें बता दिया गया है कि अब वो उस तरह के प्रोविजन जो है वो सिस्टम के अंदर रहेंगे ही नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये भी बात क्लियरली गई है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने एक पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी और आप अगले पीरियड की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, दैट विल नॉट बी परमिटेड एक्सेप्ट इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो आपको जो जीएसटीआर 1 है वो आपको सीक्वेंशियल ही फाइल करनी पड़ेगी। इस तरह का अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 37 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो अपने आप में कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी कुछ और बातें हैं एनआरआई को लेके, जो हमारी रिटर्न फाइल करने की डेट हुआ करती थी वो 20th हुआ करती थी, और या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है तो उस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जैसे ही खत्म हो रही है उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न फाइल करनी होती थी। उस 20 तारीख की डेट को जो है वो 13th जो है वो अपने आप में कर दिया गया है। एक इसके अलावा जो है वो अपने जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है, जैसे हमारे एसएससी जो है स्मॉल एसएससी हैं उनके पास फैसिलिटी है एक एफआई की करके कि उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन वो चाहें तो अपनी इनवॉइसेस को वो जो है टाइम टू टाइम जमा करा सकते हैं, टैक्स जमा करा सकते हैं, सो दैट कि जो बायर है उनका उसको क्रेडिट मिल जाए। अब इस केस में क्या होगा कि मैंने टैक्स पहले ही जमा करा दिया और मैं जो 3B फाइल करूंगा तो मैं उतना टैक्स जमा नहीं कराऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, क्या मेरी 3B एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। इस बात को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है सेक्शन 39 के अंदर, और उन्होंने ये बोला है कि अगर आप जब अपनी 3B फाइल करेंगे और आपने उसका टैक्स, अगर आपका मान लीजिए टैक्स बनता है 2 लाख और आप 40,000 रुपए जमा करा रहे हैं क्योंकि आप 1,60,000 पहले जमा करा चुके, तो दैट विल बी फैसिलिटेटेड अंडर द 3B विच इज प्रैक्टिकली अ फैसिलिटेशन मेजर अदर देन दी, कि उसके अंदर कोई किसी तरह का रिलीफ जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। एक इसके अलावा एक और बात थी कि अगर जो है वो अगर आपने जो है वो आपके पास जो है वो जीएसटीआर 1 अगर हम जो है वो फाइल करते हैं और 3B अगर मैंने फाइल नहीं करी है तो नेक्स्ट मंथ की मुझे फाइल करने की परमिशन नहीं है या वाइस वर्सा, तो अब उस केस के अंदर जीएसटीआर 1 और 3B दोनों को ही देखा जाएगा, तभी आपको जो है वो नेक्स्ट मंथ की जो है वो रिटर्न फाइल करने की परमिशन दी जाएगी। एक और प्रोविजन है सेक्शन 41 के अंदर, जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको क्रेडिट मिलता था, जो 2A से आप वो 105% और 110% की बात किया करते थे, वो मेरा प्रोविजनल क्रेडिट होता था। तो अगर मान लीजिए मैंने 105, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जितने भी लोगों ने 105, 110 लिया हुआ है उनको फाइनली ये एंश्योर जरूर करना है कि सामने वाले सप्लायर ने पे कर दिया या नहीं कर दिया। अदरवाइज वो 5 और 10% जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हमने लिया था 2A के अंदर 36(4) के अंदर, दैट वाज ओनली अ प्रोविजनल क्रेडिट। तो अगर उसने पे नहीं किया है तो उस केस के अंदर जो है
वो एसएससी से विद इंटरेस्ट जो है वो रिकवर किया जाएगा। इस तरह का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 41 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो भी हम सब लोग जो है वो एक बार के लिए जरूर इस बात के लिए नोट करें। एक हमारी जो टीसीएस की रिटर्न है, अगर टीसीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी है सेक्शन 52 में, तो उसके लिए लेट फीस का प्रावधान किया गया है, 100 रुपए पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट। तो उस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टर्नओवर है उसका 0.25% और 100 रुपीज पर डे विच एवर इज लोअर विल बी द लेट फीस पेनल्टी फॉर दी टीसीएस रिलेटेड रिटर्न। एक इसके अलावा जो है वो कैश बैलेंसेस से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सब लोगों को सुनना चाहिए, दैट इज अबाउट द सेक्शन 50, जहां पर इंटरेस्ट का रेट जो था, जहां पर अगर मैंने मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल्ड भी कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया, तो अगर यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं होगा, अभी हम लोगों ने सुना था। लेकिन जहां पर मैंने अवेल भी कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया, उस केस के अंदर इंटरेस्ट का रेट जो नॉर्मली 24% के हिसाब से मांगा जाता था, उसको 1 जुलाई 2017 से 18% कर दिया गया। तो ये बात हम लोगों को सबको नोट करनी है कि अब जो है वो इंटरेस्ट का रेट जो है वो 18% है फॉर द क्रेडिट wrongly availed and utilized and with the retrospective effect from the 1st of July 2017। सर इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो रिफंड फाइल करने के लिए कहा जाता था कि अगर आपके पास कोई रिफंड बनता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का या अदरवाइज आल्सो, तो आप अपना 3B के अंदर उसको रिफंड को फाइल कर दीजिए। पर रिफंड 3B के अंदर कोई कॉलम ही नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने जो है सेक्शन 54 के अंदर एक अमेंडमेंट किया है और उन्होंने बोला है कि इस तरह के रिफंड के लिए एक सेपरेट फॉर्म जो है वो इशू किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे जो है वो आप रिफंड फाइल कर सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस सबको, जो हमारे एग्जम्प्टेड एजेंसीज हैं जिनको 6 महीने के अंदर अंदर रिफंड फाइल करना हुआ करता था, उनको अब 2 साल के अंदर फाइल करने का परमिशन मिल गया। और जो मैंने आपको बताया एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफंड फाइल करते वक्त अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई रिकवरी अगर आपकी पेंडिंग है, तो उस केस में आपके हर तरह के रिफंड को रोक दिया जाएगा। जो कि केस में अपने आप में मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर छोटी सी भी कोई डिमांड अगर किसी व्यक्ति की बनी हुई है, तो उसका एक बहुत बड़ा रिफंड जो है वो अपने आप में रुक जाएगा। दैट विल बी अ पॉइंट दैट कि हमारे को किस तरीके से हम उसको ईज ऑफ डूइंग को हम लोग जो है वो एंश्योर कर पाएंगे। एक इसके अलावा एक हमारा पोर्टल होता है gst.gov.in। गवर्नमेंट ने बताया कि आपको जो भी कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि उस पोर्टल पे देना शुरू कर दिया, लेकिन उस बारे में कोई नोटिफाइड नहीं था। तो एक केस फाइल हुआ जिसके अंदर बोला गया कि ये तो पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज ही नहीं किया गया है। तो अब उस बात को एंश्योर करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, 9 जनवरी 9/2018 नोटिफिकेशन से रिलेटेड था ये, जिसको जो है वो इस पोर्टल को नाउ अब जो है वो रेगुलराइज करने के लिए बात की गई है, ताकि अब जो है वो इस पोर्टल को अपने आप में एक ऑफिशियल पोर्टल डेजिग्नेट कर दिया गया है, ताकि जो है वो उस पर जितने भी नोटिस इशू होंगे वो दे विल बी ट्रीटेड एज ए वैलिड नोटिस। एक बात और है, हमारे पास 2 तरह के टैक्स लगा करते थे, एक हमारे फिशरीज से रिलेटेड फिश ऑयल वगैरह का, और दूसरा अल्कोहलिक लिकर के लिए लाइसेंस लिया करते थे, जिसपे 18% जीएसटी की बात हुआ करती थी। अभी जो है वो उस केस के अंदर दोनों को एग्जम्प्ट कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से। तो अगर किसी ने टैक्स पे कर दिया हो तो उसका रिफंड जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली 1 जुलाई 2017 से 4 जो आज अमेंडमेंट आई है वो 4 रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। इंटरेस्ट का रेट 24 से 18 करना, फिश से रिलेटेड लिकर लाइसेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट करना, और एक जो है वो जीएसटी पोर्टल जिसके ऊपर सारे नोटिस दिए जाते हैं उनको 1 जुलाई 2017 से रेगुलराइज करना। ये वो 4 अमेंडमेंट है जो 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बाकी सारे अमेंडमेंट जो मैंने आपको बताए उनमें सेक्शन 114 से 123 वाले जो अमेंडमेंट हैं वो उस दिन एप्लीकेबल होंगे जिस दिन एक्ट एनेक्ट हो जाएगा, जिस दिन ये बिल एनेक्ट हो जाएगा। और उससे पहले वाले 99 से लेकर 113 सेक्शन के जितने भी अमेंडमेंट दिए गए हैं फाइनेंस बिल के अंदर, जो क्लॉज दी गई हैं, उन क्लॉजेस में जितने भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं वो सारे के सारे प्रोविजन जो हैं वो उस दिन से एप्लीकेबल होंगे जिस दिन ये बिल जो है वो अपने आप में एक्ट बन जाएगा, और उसके बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन इशू की जाएगी उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द जीएसटी फ्रंट। थैंक्स टू द स्टडी कैफे, थैंक्स टू द सीए दीपक गुप्ता जी एंड ऑल माय colleagues for giving me this opportunity. Over to you, Deepak ji. Thank you, sir. Thank you for explaining all the amendments for the indirect tax and GST. And thank you for giving your precious time to us, because we know that in today's time, all the speakers are very busy with various other sessions are also going on. So thanks a lot for your time, Atul ji, and explaining each and every provisions of the GST. Friends, so we will quickly wind up our direct tax session, which was left in middle. So Prakash ji and Sachin ji, quickly let's wind up this direct tax session, and then we will come up with
our indirect tax session with our two other speakers, CA Abhishek Rajaramji and CA Arpit Haldia ji has also joined. So we will start quickly, come up with Abhishek ji and Arpit ji. Let's wind up direct tax session quickly. Thank you, Sachin ji and Prakash ji. Thank you, and thank you, Atul Gupta Saab, for enlightening us in the GST issues here. I'm a student of the GST, so I will learn the GST from Gupta Saab. And now coming to the issue of the, I have very important amendment to discuss. The two amendment is there under the Income Tax Act. One amendment which I will request Sachin ji to take up, that is the section 79A. This amendment is a major amendment, and and after this, I will explain the issue of the section 263, where the order passed by the TPO will always be subject to the revision here. So Sachin ji, can you just discuss about the 263? Or shall I read the 263 for you? Sir, before going this, actually, there are many questions relating the new procedure for that. Sachin ji, we will take up that session later on, but right now we will confine to section 79A and 263, only two provisions. Because Rajaram sir has also joined here, so we have limited time right now. So let me see section 79. Yeah. Shall I read this 79? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. 79A is for the purpose of the set off of the losses here. We know that it was set off of the loss. And what happened in the earlier, if there was a research or either seizure, if there was a certain income on account of this one, a SSC used to take the benefit of the carried forward set off or carried forward loss. So by way of this provision, section 79A, now there's a restriction. What the restriction says, the 79A, that you cannot be allowed to take up the set off, you cannot allow to set off the loss or carry forward the loss or carry forward the set off loss when there is an income on account of search and seizure. So these are the major amendment which will block you to take the benefit of the carried forward loss. Another provision which is there, which I would like to just mention, Sachin ji, I have squarely covered this provision 79. Yes, sir. Yes, sir. And the second provision which I would like to cover, that is the section 263. Can you go to section 263? Yes. It is a major amendment here, 263, which talks about the revision by the commissioner. And here the important provision is that the order of the clause number 72, order of the TPO will be subject to the revision also. So the order, the TPO, whatever the order the TPO has passed, now the assessing officer will include the TPO, and therefore whatever the order the TPO has passed will always be subject to the revision under the section 263. So these are the major amendment we have just discussed about from the income tax perspective. We have also discussed that now the TPO proceedings will also be faceless, and DRP will also be faceless here. Yes, there are other amendment also, but we have just discussed about the major amendment, and if we will get some opportunity to discuss in detail, we can discuss in detail. But as I understand that learned speaker Abhishek Rajaramji sir has already joined here. It will be my privilege to listen him on the GST matters here, rather than discussing on the tax issue. So over to you, Sir Deepak Gupta Sahab. Thank you for giving us the opportunity. Thank you, Sachin ji and Prakash ji, for enlightening us in direct tax. And you have explained, various important provisions of direct tax changes. And friends, today's session was mainly for the broad changes that has come into the direct tax and indirect taxes. We will keep separate sessions, especially one for the direct tax, one for the indirect tax, so that we can have the detailed discussion for both the acts. And now we will start our indirect tax session as well. We have our two learned speakers of indirect tax, C. Abhishek ji and C. Arpit Haldia ji. Welcome, Arpit ji. Welcome, Abhishek ji. Namaste, Prakash ji. Namaste, Sachin ji.
नमस्ते नमस्ते सर, इट इज आवर प्रिविलेज दैट आई एम बिफोर यू सर। आज हमें मौका मिला आपको सुनने का। अरे नहीं और अभिषेक राजाराम जी से को तो मैं लिंक्डइन पे देखा करता था, अभी यहाँ पर सामने देखा है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड सचिन जी, आप भूल गए मैं आपके ऑफिस भी आया हूँ। प्रकाश सर, माय प्रिविलेज सर। आप भूल जाते हो प्रकाश सर। नहीं। So, Thank you, sir. Thank you. Arpit ji and Abhishek ji, please let me know how can we proceed further for GST. इसमें दीपक जी, we have jointly prepared a presentation covering all the amendments. So we would be taking one by one in detail. No issue. All the amendments. And what is the allotted time for us? Sir, now I think session is for all the time is for the GST, so you can take time. फिर भी GST. Sir, 8 बजे तक तो official time था, but our audience is there to listen you more than after 8 as well. So it's up to you to conclude when you want to conclude. ठीक है। हाँ अभिषेक जी, आप स्टार्ट करें। सर पीपीटी मैं शेयर करूं? नहीं, मैं कर रहा हूँ। I'm thankful Arpit ji and Abhishek ji की इतने short time में आपने PPT भी prepare कर ली है, so really all credit goes to Arpit sir। मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने एक्स्ट्रा क्रेडिट मेरे नाम पे डाल दिया। नहीं। over to you sir। हाँ जी, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सर। Friends, a very good evening on behalf of myself and Abhishek Rajaramji on the evening of the budget presentation day, and thank you to Study Cafe for organizing this webinar. And I guess that this is the first webinar on the current budget, so it's a pleasure to be on this platform. And starting with today's session regarding amendments in GST through Finance Bill 2022. See, the overall impact, in my opinion, अगर आप मेरे से first hand opinion पूछें, फिर मैं अभिषेक जी से first hand opinion पूछूंगा। जो मेरा first hand opinion है, government has tried to cover the loopholes which were there regarding implementation of various provisions in GST. जो 3B2A का मिसमैच था, रूल 86A था, रूल 86B था कि इतना % कैश यूज नहीं करना, इतना % क्रेडिट यूज कर सकते हैं, आपकी आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। तो अभी तक जो प्रोविजन सिर्फ रूल में थे और उनके एनेबलिंग प्रोविजन नहीं थे, गवर्नमेंट ने उनके एनेबलिंग प्रोविजन लाने की कोशिश करी है। जैसे पिछले साल 16(2) आया है, तो ये जो बजट है, इट इज मोर ऑफ प्लगिंग द लीगल लैक्यूनास व्हिच वर देयर इन द जीएसटी एक्ट रादर देन creating something new or bringing a amnesty type measure or a favorable provision for the taxpayers. Abhishek ji, aapko? Sir, what I feel that they have rectified their mistakes, their errors, and without accepting that they were wrong. So, इतने टाइम से GSTR 2 जा ही नहीं रही, and they had said कि GSTR 2 नहीं जाएगी. Then also the provisions were there. Provisional ITC was there. Rule 86B से काम नहीं चला. Then they came for this section. और बहुत सारी चीजें और आई हैं जहां पर आपका क्रेडिट लिंक कर दिया गया है with 2B or any other form which they may prescribe. So I feel 2C, 2D, 2E we would see in coming years. And कई जगह उन्होंने डाल दिया वर्ड कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस व्हिच वुड बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये भूल सुधार का काम करा है इस बजट। सर, मेरे को एक चीज और लगती है जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि द लेजिस्लेचर व्हिच वाज इंटरेस्टेड विद एनैक्टिंग द लॉ, now there is a new policy being developed wherein the entire powers are being given to the executives for monitoring and implementing the law. See, there are three pillars in Constitution of India. One is the legislature, second is the judiciary, and third is the executive part. What we are seeing that legislature is now delegating all their powers to the executives, and the executives are becoming the
sole power center in the entire administration of the statute, and which is somewhere down the line making the things impractical for the taxpayers. Sir, I would like to take view of Sachin sir also here. Sachin Sinha ji या प्रकाश सर, इनमें से कोई एक व्यू दे दो. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट का काम है रूल्स बनाना, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. और इसमें गलती, जैसे हम सुन रहे थे कि विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी बिल आएगा, और पिछले 2-3 साल से ये सब काम चल रहा है क्रिप्टो का, और इसके टैक्सेशन पर कोई क्लैरिटी नहीं. ये अभी क्लैरिटी दी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मशीनरी है वो फेल हो रही है रिलेवेंट लॉज बनाने में. भाई, क्रिप्टो पर अगर ये बिल 2-3 साल पहले ले आते, तो आज से पहले तक तो ये कंफ्यूजन था ना, वेदर इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी स्पेकुलेशन में डालना है, या इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स. लोग तो ये भी कह रहे थे, देन समबडी सेड कि भैया कैपिटल एसेट्स है ही नहीं. मैं इनकम टैक्स उतना नहीं जानता, बट आई कैन से दैट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन क्रिएटिंग लॉज, और इसीलिए वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. आई ऑलवेज थैंक्स यू अर्पित हल्दिया जी, बिकॉज आपने मुझे कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, और जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मुझे डीप में समझ में आया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज सो बैड कि आप जो पावर पार्लियामेंट में होनी चाहिए या वो नीचे में होनी चाहिए, वो नीचे एग्जीक्यूटिव के पास दे दिया, जिसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना. आप उसको बोल देते हो कि भैया तुम ही लॉ बनाओ, और इससे नुकसान क्या होता है, वो लॉ बनाता है अपने फेवर का, जिसमें कि आम ऑनेस्ट टैक्सपेयर या टैक्स प्रोफेशनल उसको समस्या खड़ी होती है. अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो लॉ तो जीएसटीआर 1, 2 and 3 था ना. ये 2A 2B जो बाद में आए हैं, they were never there, they were never thought. और मजेदार बात ये है कि जीएसटी रिटर्न ना भरने का नोटिस 3A में आता है, जबकि रिटर्न 3B है. So this is something which happens only in GST laws. नहीं, और in my opinion, the executives and the taxpayers are the equal stakeholders. No one has the upper hand. The only person or the only institution which has the upper hand is the legislature. And when the legislature starts to prefer the executive rather than the taxpayer, then the situation gets bad. And that's what is hampering, that the legislature is preferring the executives and not believing on the taxpayers. And that's why this entire hierarchy is there in GST. This is because they choose the easy path. आसान रास्ता दिखता है कि भैया इनको पावर दे दो, ये नीचे खुद सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस लगा लेंगे. और ब्यूरोक्रेसी का एक व्यू होता है, तभी तो लोग कहते हैं ना AAR के डिसीजन ज्यादा अच्छे नहीं क्यों नहीं आते, बिकॉज देयर द वन सिटिंग इन द ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ जज इज फ्रॉम डिपार्टमेंट साइड, और इसीलिए वो डिपार्टमेंट के फेवर में ज्यादा रहते हैं. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग एंड टोटली रॉन्ग, बट सबसे पहले 16 की बात कर लेते हैं. सबसे पहले सर सेक्शन 37, 38 करते हैं, फिर उसके बाद 16 को लेंगे, क्योंकि 16 भी अब 38 से 37, 38 से लिंक कर दिया है. So starting with today's amendments, and the most important part is that most of the amendments which have taken place in GST were approved by the GST Council in the 43rd GST Council meeting, and the background for making those amendments are there in the agenda of the GST Council meeting. And we have also provided the background in our presentation, that why the amendments have been made in the relevant section. So starting with section 37(1), see, now there have been few changes made in section 37(1). First is now subject to the furnishing of GSTR1 has been made subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. As we remember that now GSTR1 can only be furnished if 3B has been furnished for the previous month. So the rule was there, but the enabling provision which restricted filing of GSTR1 if 3B has not been filed had now been brought in the statute in section 37(1), that the conditions and restrictions for filing GSTR1 would be as may be prescribed. Now the rule has the enabling section. Now the question comes, which we would be raising at many points, that if now the amendment has been made, then how the rule prior to this was constitutionally valid?
And there is only one section, go-to section for the legislature prior to this amendment, that is section 164. And मुझे तो अभिषेक जी क्या लगता है कि पूरा एक्ट हटा दो और सेक्शन 164 रख दो, फिर रूल्स में पूरा एक्ट डाल दो, तो ये जीएसटी चल जाएगा, और अभी तक ऐसे ही चला है। नहीं, इसका एक उदाहरण देता हूँ। सर्विस टैक्स लॉस में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो एक एक करके सेक्शंस जो सर्विसेज जोड़ते रहे, विच वेंट टू 100+, बाद में नेगेटिव लिस्ट लिया है 2012 में, उसकी बजाय दो ही चीजें ऐसी थी जिसके थ्रू वो सबको टैक्स कर सकते थे। बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस, बिजनेस सपोर्ट सर्विस। जो भी आप काम कर रहे हैं, यू आर सपोर्टिंग बिजनेस और यू आर प्रोवाइडिंग एन ऑक्सिलरी सर्विस फॉर बिजनेस। तो ऐसे ही सारा काम इसमें चलता है। और जब हम प्रैक्टिकली जीएसटी ऑफिसर से मिलते हैं, they all work under section 175. Very true. Section 175. They are working under section 175. Working under 175. So the second amendment in section 37, जो मेरा एक प्रोफेशनल से डिस्कशन भी हुआ था, कि जो GSTR 1 है वो कहीं भी ये नहीं बोलता कि अगर 11 तारीख के बाद में भरा गया है तो उसकी क्रेडिट जो है वो रिसिपिएंट को बाद में कम्युनिकेट करी जाएगी, अगले महीने में, वो उसको इस महीने के 2A में कम्युनिकेट नहीं करी जाएगी। Now the corresponding amendment in section 37(1) has been made, wherein they said that shall, subject to such condition and restriction, within such time and in such manner as may prescribed, be communicated to the recipient of said supply. तो जो प्रोविजन था जीएसटीआर 2B का कि अगर 11 तारीख तक नहीं भरा तो आपको जो कम्युनिकेशन होगा वो बाद में होगा, रूल 60 सब रूल 7 में जो प्रोविजन डाला गया था उसका एनेबलिंग प्रोविजन भी अब डाला गया है, और उसके जो चेंजेस लाए गए हैं सेक्शन 37(1) में। नाउ दिस सेक्शन 37(1) इज इन सिंक विद रूल 60 सब रूल 7, which provide that the details which have been communicated in 2B would only be eligible for input tax credit. And the third amendment in section 37(1) is removal of proviso, because it has now become redundant, क्योंकि वो 11 से 15 तारीख तक का एक एडिशनल टाइम पीरियड मिलता था फॉर फर्निशिंग ऑफ GSTR 1। तो जो प्रोविजन रिडंडेंट हो गया है, तो उन्होंने ये प्रोविजो जो है ये ओमिट कर दिया गया है, और उसके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट जो है वो नेक्स्ट प्रोविजोज में करे गए हैं। तो दिस इज द अमेंडमेंट एंड सेक्शन 37 so this is the amendment in section 37(1) which has been made regarding two important things: restriction on filing of GSTR 1, which was there in rules, now it is backed by the legislative amendment, and as well as communication of input tax credit in GSTR 2B, now which is also backed by amendment in section 37(1). Coming to section 37(3), जैसा हम सबको ध्यान होगा कि GSTR 1 में अमेंडमेंट जो होता था वो ड्यू डेट ऑफ जो अमेंडमेंट था वो सितंबर का जो अगले साल का रिटर्न है उसकी फाइलिंग तक ही अलाउड था। हालांकि लीगल प्रोविजन तो ये था कि सितंबर का रिटर्न जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक 1 में अमेंडमेंट कर सकते हो, बाकी जीएसटीएन अपने हिसाब से ही करता था, कभी अक्टूबर में बंद कर देता था, कभी अगले साल के मार्च तक चालू रखता था और कभी फरवरी में बंद करता था। पर नाउ the provision has been amended and it now says that the amendment in GSTR 1 can only be made up to 30th November of next financial year। और ये चीज अब इन्होंने प्रोविजन में सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 में भी इंसर्ट कर दी है, और जहां जहां पे सेक्शन 42 43 के रेफरेंस हैं वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि सेक्शन 42 43 जो है वो अब स्टैट्यूट से ओमिट कर दिया गया है। और सेक्शन 37(4) एक नया इंसर्ट करा गया है जहां पे उन्होंने बोला है, मैं उसको वापस स्लाइड पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक आध लाइन। देखिए, जब हम कुछ दिन पहले अगर याद करें तो कुछ साल पहले जब इसको चैलेंज करा गया था तो उसमें कहा गया था कि भैया ये 3B तो रिटर्न ही नहीं है। आप इन कंपनी ने चैलेंज किया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा हाँ साहब 3B तो रिटर्न है नहीं, नाउ ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आए और इससे लिंक करने की कोशिश थी। और अगर आप इसको पहले देखें तो इट वॉज लिंक्ड विद सितंबर रिटर्न। तो सितंबर रिटर्न का मतलब होता था भैया 20 तारीख 22 तारीख या 24 तारीख 22-24 आते तो लोकेशन। लेकिन अभिषेक जी यहाँ पे ड्यू डेट नहीं थी, सेक्शन 39(9) में ड्यू डेट थी, यहाँ पे सिर्फ फर्निशिंग था। लिंक वही था कि भैया जो डेट आ रही थी वो उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट से आती थी, तो 20th 22 24 आती थी URMP के केस में लोकेशन वाइज। अब इन्होंने कट ऑफ डेट डाल दी है 30th नवंबर। ये बिल्कुल उसी तरह अमेंडमेंट है जैसे हम पुराने सर्विस टैक्स लॉज में देखते थे
कि अगर शो कॉज नोटिस जाना है तो शो कॉज नोटिस का टाइम होता था और बाद में एडजुडिकेशन करने का टाइम होता था। लेकिन इन केस में क्या हो रखा है, जीएसटी में ऑर्डर पास करने का टाइम है और उससे रिवर्स में 3 months और 6 months पहले तक का शो कॉज नोटिस देने का टाइम है, विच इज लिंक विद द एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग की ड्यू डेट से। तो कहीं ना कहीं एक कट ऑफ देने की कोशिश है डिपार्टमेंट की कि सॉर्ड हैंगिंग ना रहे। लेकिन एक और सिमिलर अमेंडमेंट जो निर्मला सीतारमण ने बोली है कि भाई अगर एक केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ चल रहा होगा, दैट इज फॉर द इनकम टैक्स भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर चल रहा होगा, तो उस केस में किसी दूसरे एसएससी के लिए सिमिलर फैक्ट्स पर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर नहीं जाएंगे, तो वो कोर्ट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो टाइम तो लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंड हो जाएगा। तो ना जाने में चले जाते तो बेनिफिट था, भाई थोड़ी कॉस्टिंग पड़ती, लेकिन एक साथ आंसर आ जाते। लेकिन इस केस में वो बहुत साल तक ओपन रह सकती है चीज। ये एक दिक्कत वाली चीज मुझे इनकम टैक्स में समझ में आ रही है जब मैं इन दोनों को लिंक करता हूँ। नहीं, और एक इसमें चीज ये है कि 30th day of November, नाउ व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ 30th day of November? क्या मेरा कोई लास्ट डेट है रिटर्न भरने की 30th day of November? यस इट हैज। क्योंकि अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग है आपका, तो लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स इज 30th November। नहीं, मैं समझ गया अभिषेक जी। तो इसका मतलब है कि मेरे को अक्टूबर का GSTR 1 या तो 30 नवंबर तक मैं पेंडिंग रखूंगा, या मैं अक्टूबर का जो 3B है वो 30 नवंबर तक पेंडिंग रखूंगा, जो हम सेक्शन 39 अब डिस्कस करेंगे। तो बेटर कोर्स वुड हैव बीन that the due date of filing of return for the month of November, or the ultimate clarity would have been that the due date of filing of annual return, that is 31st December. नहीं, बट ई इनवॉइस के केस में अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट देने तो उसी दिन दे सकते हो ना। नहीं, फॉर फाइलिंग में करेक्शन, ये GSTR 1 के करेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 30th नवंबर जो डेट आपको क्रेडिट नोट देना है, तो ई इनवॉइस के केस में तो फिर आप अपलोड कर दोगे ना उसी केस में 30 तारीख। पर मैं GSTR 1 में जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो GSTR 1 का अमेंडमेंट अब मैं 30 नवंबर तक कर सकता हूँ। तो 30 नवंबर तक तो कोई रिटर्न ड्यू ही नहीं होता, ना तो नवंबर का रिटर्न ड्यू हो रहा है, ना अक्टूबर का रिटर्न ड्यू हो रहा है। बट वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है ना सर ई इनवॉइस। नहीं, पर ई इनवॉइस के सर सारे ई इनवॉइस पे गए नहीं है, 50 करोड़ से 50 करोड़। ठीक है, स्टेप वाइज चल रहे हैं, बट इस तरह से लिंक करा जा रहा है सर इसको। मेरे better course would have been that they should have either linked it with the November return or the December return, क्योंकि अगर मेरे को कोई अमेंडमेंट भी करना है तो 30। सर बेस्ट कोर्स would have been, rather than doing such right left, they would have thought one point, it should have been linked with say September return जो थी, और annual return whichever is earlier के बजाय लिख देते whichever is later। तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग, जीएसटी के एनुअल रिटर्न की फाइलिंग तक तो उन्हें कर ही देना चाहिए था। और अब दिन भी कितने रह गए थे, अगर आप 30 नवंबर तक आ ही गए हैं तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट तो 31 दिसंबर ही थी, 30 दिन के लिए और आगे बढ़ जाते। और सेक्शन 37(4) का जो अमेंडमेंट है, वहां पे उन्होंने वही कंडीशन डाल दी कि अगर पिछला GSTR 1 फाइल नहीं है तो आप आगे का भी GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते, सिमिलर टू GSTR 3B। So this is the overall amendment in section 37, which was already there in the law, but now they have, which was already there in the rules, but now the consequential amendments have been made in the statute, other than the increasing the time limit for amendment under section 37, subsection 3. Now comes section 38. और मेरे हिसाब से सेक्शन, अभी तक तो हम सेक्शन 16 और 17 और 18 की बात करते थे ITC की, जो अब सेक्शन 38 आया है, in my opinion there is no more draconian provision in GST other than section 38, क्योंकि अब जो पूरी ITC है वो पूरी की पूरी मेरे सप्लायर पे डिपेंडेंट हो गई है। सप्लायर ने किसी भी तरह की गलती करी पाए तो सिर्फ टैक्स डिपॉजिट नहीं होता था तो ही मेरे को प्रॉब्लम होती थी, अब तो उसके सारे डिफॉल्ट्स की जिम्मेदारी जो है इट हैज बीन कास्टेड ऑन द recipient. I would ask Abhishek ji to take lead in section 38 and then I will get back to section 38. सर देखो, मेरे हिसाब से what they are trying to do, they have said कि बॉस we are not coming with GSTR 2, और आप अपनी मर्जी से, because they have removed the provisional credit also, भैया हम आपको क्रेडिट तभी देंगे when actual cash is received by us or someone has shown in there। तो ये यही 2A से लिंक करा भाई, नवंबर 2019 से 100+20% करा, जनवरी 20 से इन्होंने 110% कर दिया,
जनवरी 21 से 105% कर दिया, और आज जनवरी 2022 से ये 100% ही हो गया है विद लिंक टू 2B। क्वेश्चन इज, मेरे को याद है वेसन महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का जो वेबिनार था, उसमें आप आईटीसी पर आपने सेक्शन सेमिनार वेबिनार लिया था, और उसमें आपने भी कहा था कि ये रूल्स आ गए हैं विदाउट एनेक्टमेंट ऑफ द सेक्शंस, एंड इस पर गुजरात हाई कोर्ट में केस भी पेंडिंग है विच इज येट टू सी एनी लाइट। तो इससे पहले की चीजें और खराब हो जाएं और कोर्ट के ऑर्डर्स इनके अगेंस्ट आ जाए, नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट नो, वी हैव पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट, now you will get credit only and only with your supplier has submitted his detail, the tax has been paid, then only we will give credit to you. If credit is not received by us, then we are not going to give credit to you. और जब हम आगे जाएंगे तो इसमें एक सेक्शन में उन्होंने ये भी कर दिया है कि that we would be restricting your ITC, तो वो अभी आएंगे क्योंकि रूल 86B से भी आगे बात बढ़ गई है, and they could be 5%, 10%, 10% restriction, 20% restriction. So again, this way they are, this doesn't seem logical, because see, my credit should be that I should be allowed to say that this is my credit. Now the soul of seamless credit has gone for a toss. What they are saying that मैंने आपसे परचेज करी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिम कि भाई तुम रिटर्न फाइल करो। तो दिस इज, आई डोंट नो हाउ दिस हैज बीन, दिस वुड बी एक्सेप्टेड। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट दे वुड से, दिस हैज टू बी चेक्ड। सर, इसमें सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी एक बार मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में जो उन्होंने कंडीशन इंसर्ट करी है, नाउ द लेजिस्लेचर हैज गॉट वन स्टेप अहेड in denying the credit, and see the instances, 5 instances which have been given for denying the credit. The credit would not be allowed if the purchases have been made from any person who has obtained a new registration as per the condition as may be prescribed. तो अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा आने वाला है लॉ, क्योंकि अब लॉ जो है डेलीगेट कर दिया गया है कि आपने किसी नए रजिस्ट्रेशन से परचेज करी है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको चाहे वो 2A में दिखेगा फिर भी आपको उसकी क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि नए रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। वो जो ना 3 महीने में काम करके भाग जाता है, तो 3 महीने तक की क्रेडिट जो है वो रोक ली जाए, तो कंडीशन आनी है। बट दिस इज अ आर्बिट्ररी प्रोविजन कि क्योंकि वो नया रजिस्ट्रेशन है और आप उस कारण से मेरी आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो जो नए बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उनसे माल खरीदना बंद कर दें, तो वो बिजनेस चलाएंगे कैसे? तो पहली कंडीशन जो विच इज वन ऑफ द मोस्ट आर्बिट्ररी कंडीशन, दैट द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट इन द सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट, और जो रेस्ट्रिक्शन है cannot be availed by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed, or by any registered person who has defaulted in payment of tax where such default has continued for such period as may be prescribed, or by any registered person the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the subsection during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him during the such period as per the limit as may be prescribed. तो जहां पे आपका आउटपुट टैक्स जो जीएसटीआर 1 में दिखाया हुआ और 3B में कम दिखाया हुआ है, तो उसका भी उन्होंने उसका रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग द क्रेडिट एज मे बी अवेल्ड बाय जीएसटीआर 2B। तो जीएसटीआर 2B से अगर ज्यादा क्रेडिट अगर ली हुई है जो उसमें एलिजिबल दिखाई हुई है, तो वो क्रेडिट भी जो है वो इनएलिजिबल क्रेडिट में चली जाएगी। और सेक्शन 49(12) जो हमारा रूल 86 जो उन्होंने डाला था कि आप इतना % क्रेडिट ही यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको कैश कंपोनेंट डालना पड़ेगा, तो उसको भी सेक्शन 38 में उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। तो ये जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, उस ऑटो जनरेटेड में इन सप्लायर्स जो डिफॉल्टर होंगे उनकी क्रेडिट जो है वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में इनएलिजिबल क्रेडिट आएगी। तो अब जीएसटीएन डिसाइड करेगा कि मेरे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए की क्रेडिट आ रही है, तो कितनी तो मेरी एलिजिबल क्रेडिट है और कितनी ऐसी क्रेडिट है जो इन तरह के डीलर से मैंने परचेज किया है, और वो क्रेडिट जो है वो इनएलिजिबल क्रेडिट में दिखाएगा। और अगर आप वो क्रेडिट लेंगे तो दैट वुड बी हिट बाय सेक्शन 16(2)(BA which has now been inserted।
तो अभिषेक जी, अब ये अगर ऐसा करेंगे कि मेरी क्रेडिट 1 लाख रुपए जो 2A में दिख रही है, उसमें से बोलेंगे 5,000 की क्रेडिट तो आपके नए सप्लायर की, तो हम नहीं देंगे आपको। 5,000 की क्रेडिट उस जने की है जिसने बहुत टाइम तक डिफॉल्ट किया है, तो हम उसकी नहीं देंगे। 5,000 की क्रेडिट उसकी है जिसने अपने 3B में कम सप्लाई दिखाई थी और 1 में ज्यादा दिखाई थी, उसकी नहीं देंगे। 5,000 की क्रेडिट ऐसी है जिसने अपने ITC की अवेलमेंट ज्यादा कर ली, जो उसकी 2B से ज्यादा थी, तो उसकी भी नहीं देंगे। तो ऐसे करते करते तो अब हम एक स्टेप आगे चले गए हैं। अभी तक तो सिर्फ ये था भाई टैक्स जमा करा दे, 1 ढंग से भर दे तो मिल जाएगा। अब तो उसने कुछ गलती करी है जिसका कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी क्रेडिट मेरे को डिनाई करेंगे। तो या तो खरबूजा जो है वो छुरी पे डाल रहा है, भागा है छुरी खरबूजे पे डालने की बजाय। These type of amendments which they are brought, these are brought by sitting in AC rooms without any idea of what practically business have been run. And these opens a Pandora box of litigations, और litigations में शायद असेसी का तो कुछ हजारों का नुकसान होगा, गवर्नमेंट का कई लाख का नुकसान होगा, एंड द इमेज वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज सी these kind of amendments spoils the atmosphere also of running a smooth business. But whether the government has the power to restrict ITC merely because the supplier is a new registration or he has defaulted, how this can be in my hand that whether he has claimed credit as per 2B? Sir, देखिए, now see होता क्या है, these could be checked manually अगर इसको करने बैठे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है, बट बिकॉज एवरीथिंग इन सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिस्टम पर एक क्लिक से सारी डिटेल निकल आएंगी, देयरफॉर दीज कैन बी डन। बट अगेन, जब आप कोई भी इस तरह का अमेंडमेंट लाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड बी, दीज अमेंडमेंट शुड बी फॉलोड विद जनरल SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और उसमें गाइडलाइंस आनी चाहिए। जैसे अभी एक आजकल GST पर एक इशू आ रहा है कि आपने इससे ज्यादा ले लिया तो डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो वो जब वो बात आती है ना, आदमी डरता भी है कि भाई सस्पेंड हो जाएगा मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मिसमैच की होती है वो कई बार तो इसलिए भी होती है कि 30 तारीख को ऑर्डर निकला और आपके हैंड में 2 को रिसीव हुआ, एंड बिकॉज ऑफ ई-वे बिल आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं बैक डेट में क्रेडिट ले लूं, तो कई बार उस केस में कैश पे करना पड़ जाता है, और इतना मार्जिन भी नहीं होता कई केसेस में। आप देखिए, इतने मार्जिन पे ऑपरेट नहीं कर रहे बिजनेसेस। पर चीज ये है कि भाई सामने वाले ने 2B में ज्यादा क्रेडिट ले ली, सामने वाले ने टैक्स जमा नहीं कराया, तो मेरे पास आज की तारीख में क्या तरीका है ये चेक करने के लिए कि मैं जाके उसको एनफोर्स कर सकूं कि 2B में बराबर क्रेडिट ले। यस, वो आजकल आप किसी भी GST सिस्टम में जाइए तो वो उसका दिखा देते हैं ना कि सर वो तो मेरा खुद का दिखाएगा, सामने वाले का नहीं दिखाता। वो तो मेरा दिखाएगा। तो नहीं और मैं उसको कैसे इन्फोर्स करूंगा? सर दूसरे का भी दिखाता है। अरे पर मैं उसको कैसे इन्फोर्स करूंगा कि आप 2B के अकॉर्डिंग क्रेडिट लो? वो बोले इट इज माय लीगल राइट टू क्लेम एंड लिटिगेट, हाउ कैन यू इन्फोर्स मी दैट आई कैन नॉट टेक मोर देन 2B? सर इसमें इन्होंने कहा था ना कि GST में आपका स्कोर कार्ड आएगा। वो स्कोर कार्ड तो देखिए, स्कोर कार्ड इज टोटली डिफरेंट। अगर मैं 2B से ज्यादा क्रेडिट ले रहा हूँ एज अ सप्लायर, ठीक है ना, मेरा सप्लायर ले रहा है, तो मेरा पास उसका क्या कंट्रोल है उसको इन्फोर्स करने के लिए कि आप 2B से लो? सो माय क्रेडिट कैन नॉट बी मेड डिपेंडेंट अपॉन हिज कंप्लायंस ऑफ द लॉ। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, GST लॉ में जो आपके कंट्रोल में आ रहा है, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, उसी पर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस कहीं भी उसको चैलेंज नहीं कर रहे जो मालाफाइड काम कर रहा है। बोनाफाइड काम करने वाले को पनिश करा जा रहा है, ऑनेस्ट टैक्सपेयर पनिश हो रहा है। बट अगेन वी थिंक ऑफ दिस, ये जेन्युइन केसेस में जब SOPs आएंगी, डेफिनेटली दे विल कम विद SOPs। सर ये SOP का मैटर नहीं है, छोड़ के चलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ मैटर, क्योंकि वो 2B जब दिखाएगा इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो वो इनएलिजिबल आपको स्ट्रिक्ट, क्योंकि अब अगर हम सेक्शन 16 पे जाते हैं जो हमने करा था, द कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन मेड इन सेक्शन 16, now 16BA has been inserted, which provide that the details of input tax rate in respect of supply communicated to such registration, such person under section 38 has not been restricted. तो अब सेक्शन 38 2B जो है वो restricted ITC है, तो अब मैं SOP की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा बोलेंगे आपने restricted ITC ली है by virtue of section 16 2BA। वही तो कह रहा हूँ ना, this will increase litigation.
And it will not be an ease of doing business. और ये जो चीज है दिस इज टोटली आर्बिट्ररी कि उसने अगर 2B में ज्यादा क्रेडिट ले ली, वो नया रजिस्ट्रेशन है, उसने टैक्स जमा नहीं कराया 3 महीने तक. आई बेग टू डिफर. आप एक सेक्शन को कह रहे हैं आर्बिट्ररी, मैं तो पूरे लॉ को कहता हूँ. चलिए सर, तो सेक्शन 38 रीड विद सेक्शन 16(2)(a) is one of the major amendments which would be having a far-reaching impact. And we both speakers agreed that at least that this section is arbitrary, and going forward the law somewhere has become more arbitrary as well. But ये जो section 16(2)(a) है, this would be increasing litigation and it would be increasing the cost of doing business, क्योंकि वो जना जो है वो ऑलरेडी उसको टैक्स दे चुका है और उससे आप वापस बोल रहे हैं कि आप टैक्स भरें, और आप बिना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे सीधे आप उसको एक स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं कि उसकी जो क्रेडिट है वो इनएलिजिबल क्रेडिट है. सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी डिजायर्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एंड दिस अमेंडमेंट हैज वुड बी अ ह्यूज ड्रैकोनियन प्रोविजन. एक समस्या तो जीएसटी लॉ में ये है बार बार दैट दे आर रिड्यूसिंग और रिमूविंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड धीरे धीरे ज्यादातर सेक्शन से या रूल के थ्रू हटा दी गई है. चाहे आपका आईटीसी कमिश्नर ने ब्लॉक करना हो या आपके सस्पेंशन की बात है, तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. रूल 21A से भी डिलीट करी गई, रूल 86A से भी डिलीट करी गई, एंड इसमें तो सेक्शन के थ्रू ही डिलीट करी गई. एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल वे, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर या वेब पोर्टल के थ्रू दे आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, व्हिच इज against a thought process of a good law. The principle of natural justice always believe that the other person is not a culprit. That's why opportunity is given for explaining his cause. But the manner in which the GST is being regulated and manner in which section 38(2)(b, read with 16(2)(a) has been inserted, the primary focus is that he is a culprit. Now we are blocking you. Now you have to prove your innocence. It's reverse. They believe that from the vendor whom you have purchased is a culprit and you should be penalized. Yes. So the participants who are hearing, in my opinion, section 38 read with section 16(2)(a) is one of the biggest impediments which have been brought in the GST law. And in my opinion, and in the opinion of Abhishek Rajamji also, there should be an opportunity of hearing being given, and the things which are not in control of the assessee cannot be imposed upon him and restrict his eligible input tax credit. Section 16(2)(c), a consequential amendment has been made, and section 43A has been deleted because section 43A, reference to section 43 has been deleted because section 42, 43 and 43A, since GSTR 1, 2 and Sugam, Saral and Sahaj could not be brought, so they are now things of the past, and all the references in the statute have been removed, and expect a wholesale changes in the rules which would be coming when these provisions would be implemented. So section 16(2)(c) has a consequential amendment of omitting reference to section 43A. Yes, sir. Sir, initially they had proposed GSTR 1, 2, 3. वो आ जाती तो बहुत अच्छा रहता. They have got a second chance with annexure 1, annexure 2 and Sugam Sahaj with the proposed, और जो कि डिलीट कर दी गई. और उसके लिए तो कोरोना पेंडेमिक से पहले कहा भी गया था कि नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में इन्फोसिस के हेड भी आएंगे एंड ही विल एक्सप्लेन कि कहाँ तक बात पहुंची, एंड दे हैव गिव अ ट्रायल वर्जन आल्सो. तो पहली बार जो 2017 में नहीं हो पाया था, वो अगर सुगम सहज के थ्रू हो जाता तो जीएसटी लॉ में सिंप्लीफिकेशन आ जाता. लेकिन एक उम्मीद थी जब तक सेक्शन थे, तो मुझे भी उम्मीद थी किसी दिन तो कुछ होगा, लेकिन आज वो उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई हैं. एंड द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर हियर नाउ दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू जीएसटीआर 2 और इट्स इक्विवेलेंट, क्योंकि जीएसटीआर 2 प्रोवाइड करते ही आप अपना आईटीसी अपने मन से लेंगे जो एक्चुअली आपका जेन्युइन बनता है. एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू सीमलेस क्रेडिट, वी आर प्रोवाइडिंग यू रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट.
Yes, sir. Very true. Now, 1, 2, and 3 and Sahaj Sugam Saral, they are now the things of the past and somewhere buried. Now, the only thing which remains is 1, 2A, 2B, and to be continued. 3B. 3B. Section 16, subsection 4. Previously, the time limit for claiming the credit was due date of filing of return of the September of next financial year. Now it is 30th day of November. Again, if we see, the benefit has been given only for 1 month extra, because ideally you would be filing your return for the month of October by 20th of November. 30th of November is nowhere any due date of filing of return. It would have been better that it should have been linked with 31st of December or by the due date of filing of return of November or December, because 30th day of November falls in between and leaves the assessee as no pair, so nowhere. So actually the benefit is only extension of 1 month from September. Now they have shifted to October filing of return. Agree, sir. Nothing to add. Section 29, that is cancellation of registration. Section 29B, which was for cancellation of registration of composition person, which provided 3 consecutive tax periods. Now, since the return is a yearly return, so the cancellation would not have been effective until unless there were 3 years default. So now they have rationalized to bring it for 3 months from the due date of furnishing of the annual return. And to a more practical aspect, now how practical it would be, that previously in case of normal registration, the registration was cancelled if the returns were not filed for a continuous period of 6 months. Now the power has been delegated by the legislature to the executive to determine what should be the period of continuous period, which would be provided in the rules. Because as may prescribed refers to the rules, so rules would be providing that what is the period for which if the returns are not filed, the registration would be cancelled. So section 29 amendment is to make it more practical. True, sir. Section 34, issuance of credit note. Now the credit note, which was also not later than September, it has again been linked to 30th of November. So now all the amendments and all the rectifications and all the corrections, whether it is GSTR 1, GSTR 3B or section 34, they are now fixed to 30th of November. Section 37 we have already discussed. Section 38 we have discussed. Now coming to section 39. Section 39(5), which provides for return of non-resident taxable person, which was previously 20 days after the end of the calendar month or 7 days after the last date of registration. Now it is 13 days after the end of the calendar month. So 7 days has been reduced for filing of the return in case of non-resident taxable person. But I don't understand why they have suddenly reduced these days. जब आप वैसे सबकी रिटर्न 20th, 22nd, 24th को ले रहे हो और इनकी ड्यू डेट 20th थी और 13th को ऑलरेडी आपके पास IFF फाइल करने का प्रेशर होता है. Why this sudden change? I am unable to understand. What was the need of this change? In case of 43rd GST Council meeting, they have said the due date for furnishing of return for non-resident tax is proposed to be made 13th of the month. This is in line with the proposed dates on which GST 2B picks up data in the system. So they have made the non-resident taxable person in line with the GSTR 2B, and now how far it is practical. But the reason behind bringing this amendment was linking it with GSTR 2B. Now, if it is monthly return, then I would have think that this should be linked with 11th rather than 13th. Yes. So we can search for the reasons, but it is ultimately difficult to link it with the genuineness part also. Section 39(7), which was the proviso which provided for QRMP dealers. Now, previously all the provisions of QRMP were provided through the notification, and the statute part was only mentioning that how the tax due would be paid, but it was not referring that 35% that is the fixed limit which is required to be paid if you are not paying through the input and output method, which was not there in the law. Now the law has been amended to provide that either you pay taking into account your input and output, or you pay in lieu of the tax a fixed amount as may be determined or as may be prescribed by the legislature.
So 39(7) is also a consequential amendment that the practice was also already there, but the enabling provision was missing. So 39(7) has been amended to bring it in line with the, see what is happening, that the statute is made and then rules are brought to make it in line with the statute. Now rules are made, then the statute is made to bring it in line with the rules. But I think that this is also brought in because last year they should have brought this, because last year they made an amendment which has been notified from 1st of January कि भैया आपका जो GSTR 1 का टैक्स है, that is assessed tax and that could be recovered, of course, after 75, 73, 74, 79. तो वो जो assessed tax की बात थी, जो self assessed tax है, उसकी रिकवरी प्रोविजन तो ले आए थे, लेकिन कहीं लॉ में इसका इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा था. तो मुझे लग रहा है कि वो गलती जो पिछले साल या साथ में ले आते तो ठीक रहता, वो कहीं ना कहीं इससे रेक्टिफाई करने की कोशिश करी गई कि कहीं कोई आगे जाकर इसको चैलेंज ना कर दे. इन केस ऑफ IFF, GSTR 1 में तो कोई चैलेंज करेगा नहीं, बट इन केस ऑफ IFF द सम पार्टी माइट हैव चैलेंज्ड इट ऑल. ये सर कुछ चीजें जो है लॉ में वो इसलिए लाई जाती हैं कि चीजें हो जाती हैं, पर उसको कवर करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट अब लाए जा रहे हैं जीएसटी में. सेक्शन 39(9) इसमें 2 अमेंडमेंट करे गए. पहला तो ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 37, 38 था, क्योंकि 1 में कम्युनिकेट होना था और 2 में उसको एक्सेप्ट करना था. पर क्योंकि 1 और 2 अब खत्म हो गया, 1 इंडिपेंडेंट एक रिटर्न बन गया, तो अब उन्होंने इसको ब्रॉड बेस कर दिया कि वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल्स एनी एरर, so he may rectify it. And what is the time limit? 30th day of the November. So the 3B amendment is also now linked with the 30th day of the November. Section 39(10). तो हमने अभी तक रूल में देखा था कि आप 1 फाइल नहीं करोगे, 3B फाइल नहीं करोगे तो आप 1 फाइल नहीं कर पाओगे. तो रूल में तो था, पर अब उसका अमेंडमेंट जो एक्ट में है वो सेक्शन 39(10) में दिया गया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि अगर आपने 3B फाइल नहीं किया है तो आप अगले महीने का 1B आप फाइल नहीं कर सकते हैं. तो लॉ में अमेंडमेंट अब आया है, रूल्स में पहले आ चुका था. सेक्शन 41 जो एक बहुत रिक्वायर्ड अमेंडमेंट था, क्योंकि वो प्रोविजनल क्रेडिट की बात करता था, और इस पे केरला हाईकोर्ट का जजमेंट था जहां पे उन्होंने बोला था कि क्योंकि ये प्रोविजनल क्रेडिट है इसलिए आप इसको सेल्फ असेस टैक्स में यूज कर सकते हैं और अपील में 10% में यूज नहीं कर सकते हैं. वहां पे भी मेरा हमेशा ओपिनियन रहा कि जो कोर्ट के सामने जो इश्यू रखा गया उसमें ये कवर नहीं दिया गया कि 1, 2 और 3 आते तो प्रोविजनल क्रेडिट की बात आती. यहाँ तो 3B से ही डायरेक्टली क्रेडिट मेरे क्रेडिट लेजर में जा रही है. तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज द फाइनल क्रेडिट, सो देयर इज नो कंसेप्ट लाइक अ प्रोविजनल क्रेडिट. So now the amendment and the section 41 has been made, wherein the concept of provisional credit has been given away. Now whatever you are claiming is the final credit, but subject to the case wherein if the supplier has not deposited tax, you have to reverse it with interest, and as and when he deposits the tax, you can claim it again. So again, section 41, since section 16(2)(c) is linked with section 41, and the provisional credit thing has been done away. So section 41(2) has been inserted so that section 16(2)(c) can be implemented in the manner the legislature thinks fit. इसमें मेरे 2 इश्यूज हैं. What about section 16 subsection 4? उसने बाद में पे करा, तब उसने बाद में पे करा तो इन्होंने बोला ना कि भाई एक बार तो आपने क्लेम कर लिया, पर आप उसको रिवर्स करो क्योंकि उसने पे नहीं किया. अब वो मैनर भी अभी प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई मैंने तो क्लेम कर लिया, तो कैसे मेरे को पता चलेगा कि उसने पे नहीं किया, और मेरे को कब रिवर्स करेंगे. एक तो बात ये हुई कि अगर जब तक ये प्रिस्क्राइब नहीं करते, मान लीजिए सेक्शन को नोटिफाई कर देते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करना भूल जाते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है. तो एक बहुत बड़ा रिस्क एंड बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को आज भी लोग अच्छा नहीं मानते. They say that it should be linked with annual return rather than 30th वो September return. दूसरी चीज, मई 2018 की जो GST काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें न्यू रिटर्न्स की बात करी गई थी और फ्लो ऑफ द ITC की, यूनिलैटरल फ्लो ऑफ द ITC की बात चल रही थी. उसमें उन्होंने कहा था that we will not penalize anyone in case of a genuine taxpayer, honest taxpayer, for minimum 6 months
And first we will take action against the culprit. And if we are unable to recover the amount from the culprit, then only we will take action against him. तो कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिट मई 2018 की जीएसटी काउंसिल में दिखाई दी थी, वो यहाँ पर रिवर्स हो गई है. प्रेस रिलीज का पैरा 4 था जिसमें ये सब बातें बताई गई थी. एंड आई बिलीव कि दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम व्हाट काउंसिल हैज सेड इन 2018 एंड व्हाट काउंसिल हैज सेड इन 43rd जीएसटी काउंसिल में. सही है सर. और जो अब सेक्शन 41(2) है उसमें कहीं ना कहीं अब एग्जीक्यूटिव्स को पावर डेलीगेट कर दी गई है to provide the procedure wherein section 16(2)(c) would be implemented. और एक important चीज ये है कि जो आपने बहुत important provision चीज रेज करी section 16 subsection 4 की time limit का क्या होगा, तो in my opinion section 16(2) as it is override section 16 subsection 4, and if the conditions as provided in the section 16(2) are being completed after section 16 subsection 4, then in case section 16(2) would prevail, section 16(4) would not prevail. Section 42, 43 and 43A have been abolished क्योंकि 41, 42 मैं तो आज तक ये सोचता था कि जो मिसमैच के नोटिस अभी तक सेक्शन 42 में आ रहे थे उनका क्या होगा, क्योंकि 42 तो रहा ही नहीं और 42 इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम 1, 2, 3 लाए नहीं थे, तो 1, 2, 3 तो पहले भी 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में भी नहीं आए, तो जो 42 उनको भी कवर नहीं कर रहा था और आज आपने डिलीट कर दिया, तो वो पहले वाली डिमांड को ये जस्टिफाई कैसे करेंगे लीगली कि मिसमैच की डिमांड एक्चुअली में क्रिएट हो सकती है. देखिए आगे तो मिसमैच की डिमांड आनी ही नहीं, आपको क्रेडिट ही तब मिलेगा जब बिल्कुल नहीं, पुराने जो अभी 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में चल रहे हैं मैटर्स, अभी वो छोड़िए. मैं रिकवरी तो ईमेल पर भी आ जाती है साहब, विदाउट मेंशनिंग सेक्शन एंड नोट. हाँ, पर वो जब जाएगा मैटर ये कोर्ट में, so that would be acting somewhere favoring the taxpayer that section 42 was abolished from the statute since the required mechanism was not in process, and when the mechanism was not in process, how section 42 can be referred for creating demand for the year 17, 18 to till date as and when this amendment is brought in place. So, but that will happen when someone reaches minimum a high court. Then someone will reach very soon. Someone will read, but what executive will do? Say, for example, if X state high court gives this decision in favor of a taxpayer, Y state officer can any day say, and every day will say. They will say. ये मुझ पे applicable ही नहीं होता. So this would be reaching to the apex court, and apex court would only be resolving this issue. It will not be resolved. मुझे नहीं लगता. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी तो उन्होंने बोला ना. नहीं, पर सर जो अभी तक की हम देखें जो डेवलपमेंट है प्री जीएसटी रेजिम में भी, देयर इन आल्सो इन केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इन केस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट आल्सो they have upheld, and the Rise India SLP was dismissed by Honorable Apex Court. So genuine purchasers would ultimately get the relief, and whatever amendment they may bring under section 16(2), AA, AB, section 38, but the right of the genuine purchaser can never be restricted in by an arbitrary conditions. Do you visualize 2C coming? Can't say, sir. I have stopped predicting in case of GST. Section 47, that is for late fees. Amendment has been made and by inserting reference to section 52, because the issue was, and since section 52 was not referred under section 47, so they were not able to levy late fees for filing delay in filing of TCS return. Now since section 52 has been inserted, now very soon we will be seeing that late fees is also being levied for delay in filing of TCS return. Section 48 is for GSTP, and reference to section 38 has been removed because section 38 is nowhere now. Section 49, that is for the credit ledger. Now reference to section 43A has been removed because section 43A itself stands deleted. Section 49 subsection 4, this is one important thing, because now the condition and restriction as may be prescribed. So the term restriction has been inserted under section 49(4), which is to justify rule 86A that you can only use this much amount of credit. So rule 86A and 86B now have been given legal backing by insertion of section 49(4) and section 49(12), which we would be just referring to.
So, see, when we see 86A of blocking the credit, it says it can be blocked for maximum 1 year. But the RTI reply says it is not even open after 1 year, or debits have not been allowed from it. और अगर ये नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का रिप्लाई, आरटीआई रिप्लाई कुछ आया और जीएसटीएन ने कुछ और रिप्लाई दिया, कहा कि वो गलत एंट्री हो गई, सॉफ्टवेयर तो आपका था, आप ही एंट्री कर रहे हो, हम तो एंट्री कर नहीं रहे। अगर मैं कहता हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने गलती नहीं करी थी, तो फिर अभी एसओपी क्यों आया? दे नेवर एक्सेप्टेड कि हम गलत कर रहे हैं, बट दे गेव अ एसओपी कि साहब आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो इट इज इनडायरेक्टली एक्सेप्टिंग कि हाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। एंड 86B, व्हाट आई फील, सी आज तो उन्होंने 1% लगा रखा 50 लाख के ऊपर। Tomorrow they will reduce this 50 lakh to maybe 5 lakh. 1% could be reduced to, so increase to cash payment could be increased to 5%. And मेरे को जरूर से जरूर ये लग रहा है द रूल 86A जो ब्लॉकिंग है 1 ईयर की, वो 1 ईयर की ब्लॉकिंग बढ़ेगी। इट शुड बी इंक्रीज टू 2 years, 3 years, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब हम शो कॉज नोटिस देकर अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट हम 3 साल 5 साल तक कर सकते हैं, और आप हमें ब्लॉक करने दे रहे हो सिर्फ 1 ईयर के लिए। आई हैड अ डिस्कशन विद द सीनियर ऑफिसर, वो ये कह रहा था कि साहब ये तो 1 साल तो गलत कह रखा है इन्होंने, क्योंकि अदरवाइज अंडर सेक्शन 73 और 75 आई एम अलाउड टू डू असेस इन 3 years and 5 years, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने ब्लॉक कर दिया तो 1 साल में वापस कर दो। इसका मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं 1 साल में वो असेसमेंट करके दे दूं या क्वांटिफिकेशन करके दे दूं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है नियर फ्यूचर में कि दिस कुड बी लिंक्ड विद 73 और 74, कि भैया आपका जो रूल 86A में हम ब्लॉक कर रहे हैं, दैट वुड बी लिंक्ड विद फॉलोड बाय अ शो कॉज नोटिस एंड एडजुडिकेशन ऑफ द सेम। व्हाट इज योर व्यू सर? सही है सर, उसको पर ये चीज उनको ध्यान रखनी चाहिए कि दिस इज ओनली अ प्रोविजनल रिकवरी एंड प्रोविजनल रिकवरी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फाइनल रिकवरी, एंड व्हेन अ प्रोविजनल रिकवरी इज बीइंग मेड आइदर अंडर सेक्शन 83 or rule 86A, this is without creating a demand, and whenever a demand is created, a right to appeal is there, and appeal can be filed by merely depositing 10% of the tax. When you are provisionally recovering the entire amount of tax, either by way of restricting the credit or attaching the bank account of my property, you are taking away my right to appeal by depositing 10%. And if I remember correctly, there was a Supreme Court judgment in case of grant of bail, wherein 10% of the disputed amount was required to be deposited, because the right to appeal is there by depositing 10% of demand, and they have given a bail by asking the person to deposit 10% of the disputed amount. So again, if they are increasing, they are somewhere taking away the right to carry on business, and that would be infringing article 19(1)(g) of the constitution. और अगर हम सेक्शन 49(4) का जीएसटी काउंसिल मीटिंग का एजेंडा देखें, तो वहां पे वो बोलते हैं गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रूल 86B मैंडेटिंग रेस्ट्रिक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. लॉ कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट इट वुड बी एप्रोप्रिएट इफ अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 49 इज मेड फॉर सच सिनेरियो. मतलब रूल तो पहले लाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसको सही कैसे करना है, एंड दैट इज देयर क्लियरली इन द एजेंडा रिटन इटसेल्फ दैट द स्टैट्यूट इज मिसिंग द एनेबलिंग प्रोविजन. पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जब भी ये कोर्ट में मैटर्स जा रहे हैं, तो व्हाई दिस thing is not being taken seriously by the courts, that the rules are being implemented and the enabling provisions are being inserted subsequently in the statute. मुझे ऐसा लगता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, टेस्टिंग कर ली, पहले रूल ला के टेस्ट कर लो, अगर ठीक ठीक रिजल्ट आ रहे तो अमेंडमेंट ले आते हैं, अदरवाइज रूल को डिलीट करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह सेक्शन 49(12) जो है वो भी उन्होंने बोला है कि रेस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट के लिए हम इतना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आपकी क्रेडिट को। तो रूल जो भी अपने रूल्स हैं जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि 50 लाख से ऊपर आपको इतना तो देना ही देना है और 1% आपको कैश में देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो सेक्शन 49 की जो भी अमेंडमेंट्स है, नाउ दे आर क्रिएटिंग एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर द रूल्स विच आर ऑलरेडी इन प्लेस। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 का अमेंडमेंट जो है
तो जो एक लॉ में बोला गया था रिसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि अगर आपने अवेल करके यूटिलाइज किया है तभी आप पे इंटरेस्ट लगेगा. तो दैट provision has now been inserted under section 50 subsection 3 that interest would be payable only on wrongly availed and utilized. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 24% से घटा करके 18% कर दिया गया है इस बजट में. सो नाउ द इंटरेस्ट वुड ओनली बी पेएबल व्हेन द आईटी हैज बीन अवेल्ड and utilized, not availed or utilized. सेक्शन 52 जो टीसीएस रिटर्न का अमेंडमेंट है वहां 30th डे ऑफ नवंबर को उससे लिंक कर दिया गया है. सेक्शन 54 जो लास्ट हमारा प्रोविजन है वहां पे जो पहले सेक्शन 54 का प्रोविजो था वहां पे उन्होंने बोला हुआ था क्योंकि 1, 2, 3 आते तो कैश लेजर के रिफंड के लिए कोई अलग से रिफंड एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ती, और क्योंकि 1, 2, 3 नहीं आए तो आरएफडी 01 में अप्लाई करना पड़ता है. सो नाउ द फॉर्म हैज बीन इंसर्टेड दैट फॉर्म वुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड आरएफडी 01 इज द फॉर्म. सो रूल्स अगेन वाज देयर बट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाज मिसिंग. नाउ इट हैज बीन इंसर्टेड. नहीं, इसमें एक इशू ये है कि अगर आप आरएफडी 01 और जीएसटी रिटर्न्स को अगर समझें तो जीएसटी रिटर्न में जब लॉ लाए और बार बार गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपने गलती से ज्यादा दे दिया पैसा या आपका कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो आप कभी भी पैसा वापस मांग सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी टाइम की. और आपको अपनी रिटर्न में जीएसटीआर 3 में इसका कॉलम था कि आप चेक कर दीजिए, चेक बॉक्स में डाल देते और वहां से आपको रिफंड वो बिना कोई सवाल करे आपको आ जाता. और जीएसटीआर 3 कभी आई ही नहीं. बिकॉज जीएसटीआर 3 कभी आई ही नहीं तो डिपार्टमेंट ने बार बार कहा कि साहब आप फॉर्म लेकर आइए. ये गलती यहां पर फॉर्म मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, प्रोविजन वैसा ही रखना चाहिए था. इनको जीएसटीआर 3 में एक्स्ट्रा कॉलम डालना चाहिए था जिससे कि उसी रिटर्न के थ्रू पैसा आ जाता. अब क्या होगा, जब आरएफडी 01 आप फाइल करते हो तो पूरा प्रोसीजर उस तरह जाता है. आपकी रिटर्न एप्लीकेशन मानी जाती है, रिफंड एप्लीकेशन, फिर वो सारी चीजें चेक करते हैं. तो जो सिंप्लीफिकेशन का काम जीएसटी 3 कर रही थी उसके इक्विवेलेंट काम आरएफडी 01 कभी नहीं करता बिकॉज दैट वाज ऑटोमेटेड. वो ऑटोमेटिक होता और इसमें अलग से प्रोसीजर है. और जब आप प्रोसीजर में जाते हो तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब भी आप रिफंड मांगते हो, चाहे आपका कैश गलत जमा हो गया, वो बहुत सारे नखरे करता. और छोटे अमाउंट के लिए तो कोई अपील करता, फॉर्म फाइल ही नहीं करेगा. मान लीजिए किसी ने 10,000 20,000 गलती से पे कर दिया, 50,000 गलती से पे कर दिया, तो रिफंड एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा. सर माइनस का फिगर 3B में आ नहीं पाया अभी तक, तो वो अलग से चेक बॉक्स ताकि वो रिफंड आ जाए, वो तो बहुत दूर की बात है. सर मैं तो आइडियल वर्ल्ड में रहता हूँ. नहीं मैं देखिए जो चीज आप बोल रहे हैं मैं 100% उससे इत्तेफाक रख रहा हूँ, पर चीज वो है कि माइनस का फिगर नहीं आ पाया तो ये क्या कर सकते हैं. सिंपलेस्ट थिंग वाज इंसर्शन ऑफ द वर्ड सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड दैट हैज बीन डन. पता है पर आपकी बात एकदम सही है कि अगर आज मैं आरएफडी 01 लगाता हूँ एक्सेस कैश बैलेंस के रिफंड के लिए, तो दे आर चेकिंग माय 3B and 1, दे आर चेकिंग माय जीएसटीआर 7 and 1, दे आर चेकिंग माय 3B and 2A, and they are not giving me refund unless until I am depositing their demand. Whereas when the amount deposited in cash ledger is not a tax, it is merely a deposit which has been voluntarily deposited by me. How can you put a condition on granting that refund to me? एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम कि जो ऑटोमेटिक काम होना था वो नहीं हो रहा. अब मुझे तो ये लग रहा है कि आज हम इतना हंस रहे हैं, लोग कहेंगे कि इनको जीएसटी आता भी नहीं आता. चलिए सर, सेक्शन 54B जो यूनेस्को और ये जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे 6 महीने का टाइम पीरियड था, वहां पे उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है. सेक्शन 5410 यहाँ पे बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट किया गया है और जो लगता छोटा सा है पर उसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े होंगे. पहले सेक्शन 54 सबसेक्शन 10 जो है वो सिर्फ उसमें रिफंड विदहोल्ड करने की पावर तभी थी जब वो 54(3) का रिफंड था, मतलब वो एक्सेस क्रेडिट का रिफंड था. Now this reference to 54(3) has been deleted. Now this 54(10) is applicable on all the refund applications which have been filed, including the refund application for cash ledger.
तो दिस इज अ वेरी फार रीचिंग अमेंडमेंट, और जो बहुत छोटा सा एक डिलीशन देख करके हम मान लेते हैं कि ठीक है क्या फर्क पड़ेगा, पर ये फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा. नाउ द डिपार्टमेंट हैज इवन द पेमेंट रिफंड अंडर IGST would be subject to 5410. Even the refund under cash ledger would be subject to 5410. Previously only inverted duty structure or the refund for export wherein I am exporting against LUT was only subject to section 5410. So a very big amendment, Abhishek ji. Or again, the power has been given to withhold the amount even though the demand might be exaggerated, and even though I would have the power to file the appeal. Now, these kind of provisions are as per provisions in VAT laws, जहां पर provisional attachment तक की पावर होती थी, और जो जिसको आप जो राजस्थान में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट हमारे यहाँ उसको रिकवरी अमीन बोलते थे. रिकवरी अमीन साहब अपने बैग में साइंड लेटर लेकर घूमते थे, और अगर आपने उन्होंने अच्छी से चीजें अपनी नहीं समझा, मतलब समझ रहे हैं, तो वो जाकर आपके बैंक में वो लेटर पर आपका नाम भर के, नंबर भर के और अमाउंट भर के कुछ भी रैंडमली जमा कर देते थे, और आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाता था. कुछ स्थितियां वहीं घूम कर आ रही हैं. जो वेट लॉस की समस्याएं थी जिसको दूर करने के लिए GST लाया गया था, वहां की बुराइयां धीरे धीरे इसमें इंपोर्ट हो रही हैं. सही है. और सर आप तो जो रिफंड वाला था वैट में, उसमें कभी कैश लेजर का कंसेप्ट नहीं होता था, पर यहाँ तो कैश लेजर कंसेप्ट है. अगर आप उसके रिफंड को भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 5410 बना देंगे तो मेरे हिसाब से इससे खराब जो है टैक्स पेयर के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता. सेक्शन 54BA, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाईज जो SEZ को थी जहाँ पे वो रिफंड क्लेम करते थे, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था. तो वो क्योंकि एक्सपोर्ट जो था वो टेकिंग गुड्स आउट ऑफ द कंट्री था, टेरिटरी ऑफ इंडिया था, पर अब स्पेसिफिक टाइम लिमिट डाल दिया और उसको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 से उन्होंने रेलेवेंट डेट को लिंक कर दिया. सेक्शन 168 में रेफरेंस टू 38(2) था, सेक्शन 38 में GSTR 2 रहा ही नहीं, तो इसलिए रेफरेंस टू सेक्शन 38 एंड इन सेक्शन 168 हैज बीन ओमिटेड. और जो मैंने आपको बोला सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% की 18% कर दी है, उसका कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इसी बजट में दे दिया गया है, सेक्शन 115 ऑफ फाइनेंस बिल 2022. और ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सेक्शन 99 से लेकर के 113 तक के जो प्रोविजन है दैट वुड बी नोटिफाइड फॉर अ लेटर डेट, और सेक्शन 1 से लेकर 98 तक के अभी नोटिफाई हो जाएंगे, और सेक्शन 114 से लेकर के उसके आगे के जो प्रोविजन है आई गेस सेक्शन 118 या 19 तक के है, उनके लिए वो अभी मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस बिल दे हैव बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट ओनली. सेक्शन 1 से लेके 99 तक शायद 1 अप्रैल 2022 से होंगे, 99 से 113 वाले नोटिफाइड डेट से होंगे, और इन सेक्शंस के लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो शायद ये आज की डेट से ही इफेक्टिव हो जाएंगे. तो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज डेलिब्रेशन ऑन द GST प्रोविजन. और अभिषेक जी एक पॉइंट और रह गया, हालांकि इतना डीप में जाना है नहीं है, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है एक GST रेट नोटिफिकेशन में 2301 में. हाँ जी. तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें बड़ी अच्छी वो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ें. वो कह रहे हैं कि जुलाई 17 से 30 सितंबर 2019 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से तो ये रिकवरी थी ही नहीं, बोले जुलाई 17 से 2019 तक जो रिकवरी नोटिस हमने भेज दिए तो खत्म हो गए, लेकिन अगर किसी ने पैसा दे दिया है तो जो कलेक्ट हो गया वो हमारा है, वो हम वापस नहीं करेंगे. ये बड़ा अच्छा मतलब देखो विचार तो उनके यही रहते, बस अच्छी बात ये है कि लिख कर दे दी. सही है सर, सही है. तो इसमें अब विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज सेशन. और जो हमारे से बेस्ट बन सकता था गिवन टाइम फ्रेम में, जितना कॉम्प्रिहेंसिव हम दोनों कर सकते थे, वी हैव ट्राइड टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली. एंड सर अभिषेक जी, अगर आप और हम बोले तो दिस बजट इज मोर ऑफ अ पैच वर्क इन GST rather than inserting a new condition for the benefit of the taxpayer. तो जो पैच वर्क में जहां उनको लग रहा था कि लीगली दे वर फॉलिंग शॉर्ट,
They have tried to cover those gray areas and put in the enabling provision. Now it is up to the courts to decide that whether the amendment is prospective or retrospective, and if it is prospective, then what happens to the previous period, whether section 164 would come to the rescue of the government. देखिए मेरे हिसाब से what I feel with this year amendment, I feel many rules will come in coming days. और अगर रूल से सही आंसर मिलेंगे, उन्हें फायदा होगा, तो अगले साल उसके लिए वो सेक्शन ले आएंगे. So handing over session back to Deepak ji. Sir, thank you Abhishek ji, and thank you Arpit ji for giving the excellent presentation of budget. And आपने काफी अच्छे डेलिवरी समझाया है, and rightly said कि कोई नई amendment as such majorly नहीं है, but जो गवर्नमेंट ने अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करी है विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी. एंड वन पॉइंट जो अभिषेक जी ने बहुत क्लियरली बोलता है, अगर क्रिप्टो करेंसी पे इफ दे कुड हैव ब्रिंग यू नो सम नोटिफिकेशन समथिंग अर्लियर, जो कि 2-3 साल पहले आ जाते, तो शायद बहुत सारे लोगों को जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आज धक्का नहीं लगता कि ये क्या हो गया हमारे साथ. तो जो चीज आप वो 2 साल बाद ला रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी तो बहुत पहले से चल रही है, तो वो पहले आ जाता तो वो सही रहता. एंड जीएसटी में भी लाइक जिस हिसाब से गवर्नमेंट जा रही है कि पोर्टल के हिसाब से एक्ट बन रहा है, कि पोर्टल की फंक्शनलिटीज के हिसाब से एक्ट बन रहा है. एंड सेकेंडली कि क्रेडिट को लेके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए. सो आई डोंट नो आने वाले टाइम में कैसे बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे और कैसे काम होगा, और लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है. जैसे कि आप सामने वाले का को कैसे चेक कर पाएंगे, जैसे अर्पित जी ने बोला कि उसको मैं कैसे चेक करूं, उसको मैं कैसे बाउंड करूं. उसका मतलब तो ये हो गया कि भैया जिसने टैक्स पे कर दिया उससे से आप सामान लो, जिसने टैक्स नहीं यार दीपक जी, मतलब इसमें तो ये चीज है कि उसने 1 भर दिया, मेरे 2A में दिख रहा है, फिर भी आप मना कर रहे हो कि वो नया रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं देंगे. हाँ. अरे तो यार फिर तो कर ही दो कि यार वो जो ना दिल्ली में जो भी बैठ के GST-R1 फाइल करेगा उसकी क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगी, या जोधपुर में बैठ के जो GST-R1 फाइल करेगा उसकी क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि वो जोधपुर में रहता है. तो वही तो कह रहा हूँ. तो आने वाले टाइम में पता नहीं हाउ बिजनेसेस विल सर्वाइव. इस हिसाब से जीएसटी चल रहा है, मतलब सीमलेस फ्लो तो कहीं बचा ही नहीं है, सब कुछ बट डिफिकल्ट कर दिया है. आई थिंक जो 1% या 0.1% टैक्स पेयर्स जो कि ये काम कर रहे हैं, उसके चक्कर में जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं और जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है. सो इंस्टेड ऑफ कैचिंग द एक्चुअल कल्प्रिट्स, गवर्नमेंट ने वो सारे रूल सबके लिए बना दिया है, एंड उसमें वो 99% या 99.99% लोग ज्यादा पिस रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जो 1-2% है उन्होंने तो रास्ता निकालना भी निकाल लेंगे. वो उन्होंने जो काम करना हो कहीं ना कहीं से काम कर लेंगे, वो मुझे ऐसा लगता है. एंड वेरी वेल प्रेजेंटेशन बाय ऑल द स्पीकर्स इन टुडे सेशन. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द बजट, and we have got various knowledge of GST as well as for the direct tax as well. I'm thankful to all the speakers for direct tax as well as for the indirect tax, and respected past president of ICA Atul Gupta ji as well for giving time and taking up session and enhancing the knowledge of all the viewers as well. We will come up with the detailed session as well, because मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स का जो डिस्कशन चल रहा था और जो अर्पित जी और अभिषेक जी का डिस्कशन चल रहा था, 1 घंटा सफिशिएंट नहीं था पूरा बजट डिस्कस करने में. बट इन टुडेज टाइम बिकॉज क्रक्स हमें देखना था कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, so we have kept it for the 2-hour session, and still अभी 2.5 घंटे हो गए हमें, and all the things are not covered, so we will come up with the detailed session as well. I'm thankful for all the speakers कि आपने अपने बिजी टाइम में, बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला and taken first session here with Study Cafe. Thank you all the speaker, thanks a lot all the participants as well, and those who are late, you can see the recording as well. Recording is available on the YouTube. With this, I would like to wind up our today's session with due permission of Abhishek ji and Arpit ji. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.